So hi everyone. So I hope सबने lunch कर लिया है and now the judges have arrived. आई एम नॉट श्योर इतनी जल्दी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. आज के बाद भी हमें और तारीख मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट यस, जज साहब कुछ ऐसी चीज़ों पर भी क्वेश्चन कर रहे थे. एक मिनट, आवाज़ यार मैंने बंद करी हुई है. Running says 106, PDF 108. Of the Karnataka High Court. Karnataka. This is Rajasthan is 106. Rajasthan High Court, annexure R13. R13, okay. Earlier one is Karnataka. This was only pertaining to one candidate. That is not relevant. Rajasthan. PDF 26. Okay, what page is this? Hold on, slide. So they are just settling down and listening to all the arguments. जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एनटीए से, अब एनटीए को जवाब भी देना पड़ेगा. ये जो नीचे वाले लॉयर है बेटा वो एनटीए के हैं, एंड ये जो राइट साइड पे देख रहे हो ये बाकी के पिटिशनर्स हैं. ठीक है, तो उनसे पूछा था कि जिन्होंने जो 15,000 बच्चों ने 9 और 10 अप्रैल को री रजिस्टर किया, उसमें से कितने बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, कितने बच्चे 1,08,000 के बीच में आ रहे हैं. तो ये क्वेश्चन था. लेट अस सी इफ दे कैन आंसर. वॉइस बेटा वो उन्होंने म्यूट किया हुआ है, उनकी वॉइस इसीलिए नहीं आ रही बिकॉज दे हैव म्यूटेड इट. जब वो इसको चालू करेंगे तब ही आएगी आवाज़. तो ठीक है. Yes, but I'll just answer. But we received representations, similar representations. So, Manoj, it was thought proper, pro-student measure, that let everyone get an opportunity to apply. But the relevant figures are now, Manoj, with me. No, but this order was in respect to one student. One student only. Who had not paid his fees. Correct. So now what did the NTA do? NTA allowed everybody to apply afresh. Yes, correct. And 900 emails on account of inability of the students to make the application due to mismatch, not able to Aadhaar authentication could not be done by most of the students. OTP was not received, OTP could not be received, and fees could not be made. So all these aspects were the subject matter of fees representation. In the light of this court order and the order of the Honorable High Court of Karnataka, we opened up this registration. But this order had nothing to do with that. This order is the Karnataka disposed it. But the relevant figure is this. Lord, we received, as my learned friend says, because of these difficulties, they could not make the appropriate application within time. Lord, we received 15,000 new registrations, approximately, maybe plus or minus. We received 3,000 physical representations and 900 representations on email. But the relevant figure is this. Out of this new 14,094 students, 15,094 students. Yes. Those who will be getting admission in 1,08,000 are only 44. 44 students are qualifying for getting admission and are within 1,08,000, which is the total number of medical seats. 40. And let's 12,665 candidates are getting less than 200. That means they are failing. 12,665 out of these. 200 marks out of 720. Out of 720. They are failing. Out of 1,500, 12,000 are 15,000, 12,000 are failing. Just to indicate and satisfy. Only 44 got in at Yes, to satisfy our Lordship's conscience that this was not, my Lord, intended to help someone. Right. It was, my Lord, a pro-student measure ultimately that we have received 3,000 physical representations and 900 representations on email. Let
window be open for 2 days. And the figure new registration is 15,094. 15,085. Not I stand corrected. Out of this 14. Oh. $1,085. 85. Yes, Mr. Huda. Yes, Lord. Lord, I don't want to spend much time on No, that. one more aspect. Manoj, there was one kind of a discrepancy which was noticed in the first half regarding the Jaipur. Look, the chart which your lordships have seen contains where in 2003 and 2004 there was an increase. In 2003, 3 persons fall within, let's say, first 100, and it became 4. In Jaipur, that is Rajasthan, 2023 also 9 students were in first 100, and this time also they were in first 100. So that chart depicts cities where there is an increase this time, which is from 2 to 4, 2 to 5. The rest are 1, 1, 0, 1, 1, 0. Yes, on the IIT chart, I don't want to spend much time. Just 2-3 tables I want to show, and I So want now, to proceed because there are much better evidence on record to show a leak and a systemic. Now, what are your submissions? Now, why don't you formulate My your submission? submission with regard to IIT chart first was that there is a conflict of interest. 2, they have taken the data of 23,33,000 to have this bell-shaped curve and to say that it does not show any abnormality. I say 1 or 2 or 3% insertion of other candidates using unfair means can't be detected in such large data. Yes. Third, I say the different tables they are giving without declaring the result, they are giving the data only with regard to 2 to 3 cities and not the entire data for the scrutiny of the petitioners. Yes. It's a sampling they have done to suit their own. Eight and 9 at page 15. They are drawing, can you see table 8 and 9? How wrong they have gone in their analysis. They are showing a table 8 at page 15. The center-wise rank of top 500. Now, my lord, for 24 is the table 4. So Bhatinda they say only 5, Sikar they say 4, Surat they say 4. Now, my lord, they are comparing this with the data of 23. Where did you get that table? Table 8, my lord. Table A. Correct. Table 8 center-wise rank of 2024. Yes. So they focus on Bhatinda, Sikar and Surat, and they give the number of students. Now the next table, they are comparing the 2 tables to show that there is no abnormality. In the next center-wise rank of 23 of top 500. Now they are comparing Rajkot with Bhatinda, Vijayawada with Sikar, Delhi with Surat. I do not know how they do it. If they are doing a comparison, center-wise rank of 2 different years, they have to compare apple with apple. But they say, no, we will do it like this. This doesn't make any sense whatsoever. And the argument I'm making is, they cannot take support of this IIT Madras report to say that there is no leak and there is no cheating. No, that and is- That they're the doing, only thing they are is, seeing if there's any abnormality. That's all. they, Whether there's a leak or IIT not, you have to establish alien date. Yes, the only thing is IIT Faridabad has not been able to pinpoint the red flags. They say we have not been able to find it.
everything seems to be normal. Now, let me kindly see table 16 straight away, and then I don't want to waste a lot of time on this table because that is not a clinching on either side. Just to show that the kind of inflation is there, which is shown in table 16. And they say this is normal. I say this is not normal. Let me kindly see page 17. Now they have given the total number of candidates for 3 years with a rank of 550 to 720. This is the marks range 550 to 720. This table 16. 2022 in this marks range. I have done the total. The total of 2022 from marks range of 550 to 720 is 49,134. Let me kindly note it somewhere. 24. 49,134 is 2022 total candidate in the marks range of 550 to 720. For the next year, 2023, the number goes up to 64,520. If I total all the 4 categories given here. For 2022, how much was it? 2022, it was 49,134. Yes. 23, this number goes up to 64,520. And There is an increase of 15,000 approximately. and 24? And 24, this figure goes to 1,42,137. So the increase is 77,000. So the previous year, the increase was 15,000. How many students actually appeared in 2022, 23 and 24? Total students. Yes, so there is an increase of about 1 lakh students. 2022, how many students appeared? Well, it is 3 lakh students. 2.95 to be precise. 2.95 lakh. Sir, It will be more. and And 23, No, it must be much more. And it has to be more. Mr. Kaushik, in 2022, how many students appeared? okay, yes, but I have this. This is total Total number. 1,87,000. Yes. But, to 1 lakh? is, Oh, I have the exact figures. Once again, 80. I have the exact figures. I've got the figure, correct figure. It's 18,72,343 registered, 18,72,000. 17,64,571 actually appeared. 17 lakh? 17,64,571. Yes, 22. In 24 minutes, 23? 23 registered is 20,87,462. Yes. How many appeared? Appeared is 20,38,596. And 24? 24 minutes registered is 24,06,079. And appeared? Appeared is minutes 33,297. So between 22 and 24, the number who registered has gone up from 18 to 24, which is about, say, 33% increase. And those who appeared increased from 17.64 to 23, again about, say, 33%, 1/3 increase. So as opposed to the increased number of students, about 33% increase, the number in the top echelons has gone up almost by 300%, from 50,000 to 1,40,000. The increase, I have another. Necessarily draw a correlation that therefore the examination is It can be a lot also. But there is a reason given by blood, yes. according to you, there was a reduction in the syllabus.
No, they have, my lord, IIT Madras, IIT Disclose there was a corresponding increase which we have placed on record. There is not a whisper. And just one thing more. There was an increase in the syllabus. There is an increase in the syllabus. And neither the IIT Madras is talking. IIT Madras. How do you demonstrate that there was an increase in the But syllabus? I have a document placed on record, but they can't deny it. Show us that. I will straight away show it. Just want to show it here. Just one thing. Increase of number of people in the examination in 2021 was 1,78,000. 22 it was 2.2 lakh increase. In 23 2.74 lakh, and 24 the increase 2,95 lakh. So the increase is almost linear. From About 33% increase every year. in terms of lakhs, what I'm saying, About 1/3, roughly 1.7 lakh, 0.2 lakh, 0.74 lakh, and now 0.95 lakh. It's almost linear. 15%. 15% at every year. Here, the jump is not fivefold. In the number of candidates falling in that category, 77,000. Previous year, the difference was 15,000. But can this by itself be indicative of a leak in the question paper? No, I would say there is a smoking gun on the blood. Blood, it's a red flag. Acha, it's in second document. बेटा रेड फ्लैग्स के बारे में बातें हो रही हैं कि क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं हमारे, है ना, आपस में डिस्कस कर रहे हैं. वो कह रहे हैं डज दिस इंडिकेट द लीक? दे सेड नो. Let me kindly have my supplementary note circulated yesterday. Your lordship would note, even in the first bracket, that is 700 to 720, there is a remarkable jump. In 2022, 99 students, my lord, fall That within, goes up to 2321. and 350 in last year. That is also almost, my lord, there. Right. So that keep on happening because many students, my lord, appear, they could not make it, they reappear in the next year. These are the dynamics. Because in that marks range, 22 to 23, the increase was 15,000. 23 to 24, in the same marks range, the increase is 77,000. Mr. I do it there. I do it Uda, there, blood. you have to have something more concrete. That's right. I will. Just give I'm us a straight away specific, coming blood, to the best part of my submission. You are the best part. Yes, I am straight away coming just Yes. after showing that there is an increase in this labor. What was that? Yes, Lord, allow me, Lord, my supplementary submission circulated yesterday. Yes. This annexure A, page 7. But the following syllabus was increased in the NEET UG 24 examination topic increase in biology. Lord, this is the topic added. And then, Lord, on the next page, topics increased in chemistry. Yeah. Then page 8 is the topics increase in chemistry. These are the topics added at page 8. And then page 9, topics increase in physics. Notified just 5 months before the examination. Eighteen topics in physics, chemistry, and biology. And what surprisingly, the conduct of NTA is that there is not a whisper that this syllabus is not only reduced or deleted part of it, but it is increased also. They should have come clean. Well, you got Now, but straight away, this honorable court on the last date of hearing directed NTA to identify, first of all, this honorable court directed that how the paper was said, how it was sent to printing, then how it was sent to the centers. The chain of custody. Now, in the chain of custody, their reply is, Now you're going to the
The most important That's point. right. Straight up. So what is the submission now? You just formulate it. Yes, that we'll get it. the submission is, their own case is that the questions papers were dispatched for the respective cities on 24th of April 2024. I'm sorry, 24, no. Overall, 24th of April 2024, the papers were dispatched through a reputed courier company, which is a private company in any case. Their name has also come out in everywhere. And it reached the SBI and Canara Bank on 5th of May 2024. 3rd of May, I'm sorry, 3rd of May 2000. It was in rickshaw. Now, just one clarification. They were sent to the SBI Canara branches in those cities, or what happened? Where were they sent to? They were sent to the cities. So wherever that's the total exam, that exam was held in how many cities? 571 centers in 90, how many cities? 571 cities, 4,700 4,750 centers. Right, we had said that last. Now, with regard to the interesting part now comes So these papers were sent to SBI and Can Bank in these 571 cities. That's right. This is what they say in their reply. Each of these cities had a SBI branch and a Can Bank branch. Yes, yes. And blood, the dispatch, not make any notice this date. So they were dispatched on 24/4 74. and reached on 3rd May. The receipt is 5th of May 2024. 3rd of May. 3rd of May 2024. So the time gap is about almost 9 days. Yes, this is one aspect. They have not divulged. Now, please, He is referring to Patna. I'm not referring to Patna. I'm coming to We are not Hazaribag and then Patna. I'm not. That is a separate story. Hazaribag. तो सीधा हमारा सप्लीमेंट्री नोट सो पेपर डिस्पैच अपने कब हुए थे 24 अप्रैल को और पहुंचे हैं एसबीआई और कैनरा बैंक में 3rd ऑफ मई को, जिसमें हमारे टोटल 4,750 सेंटर्स और 571 सिटीज़ में पहुंचने में 8 से 9 दिन लग गए हैं. तो नाउ ही इज़ पुटिंग फॉरवर्ड हिज सबमिशन कि इस बीच में क्या हुआ होगा. ठीक है, क्या हुआ होगा, तो वही डिस्कस कर रहे हैं बेटा, है ना. नंबर्स बहुत सारे हैं, नंबर्स आई नो बहुत ज़्यादा हैं. क्या लगता है बच्चों, आज निर्णय तक पहुंच पाएंगे? Uniformly on the 24th of April. Look, I will explain. Hazaribag. As CBI has investigated the entire chain from the printer till it is delivered to the center, and how there are checks and balances, sealing, GPS tracking. If there is any tampering, then the GPS immediately sounds alert that there is at some stage, at this particular place, on this particular date, there is a there are digital lockers and locks, etc. I have given that detail. There is a 7-layer security, 7-layer safety features. And now, what has come on record now? I'm straight away coming to that. It was dispatched on 24th of April 24. I'm sorry, 28th of April But you just said 24th. So was it legal? with regard to Hazaribag. No, one thing we want to know. Let's be clear on facts. Was the dispatch for all centers, all cities on the same day? Yes, let's from the printing press, but its destinations are different across the country, including Andaman Nicobar. It takes separate time. So we have That you're right. But for the dispatch across the country, did the papers leave the printing press on the same day? they start leaving it. They start leaving. When? Distance between 24th April to 28th April. They are dispatched from the printing press. May I explain that system, my lord, how it starts and how it is received by the center?
So the printing press basically distributed the answer sheets and the question paper. There are two printing presses because there are two papers. Right. One of them is to be chosen. Right. When So the two printing presses started distributing the question papers between the 24th and the 28th in different cities. in different cities. 24 to 3rd May for others. With regard to Hazaribag, 28th to 3rd of May. For dispatch. Yes, my lord. Dispatch for Hazaribag, they say in the affidavit, NT affidavit, but I just want to read, because in deference to my lord's direction, that how it was transported, you specify. They have filed a reply. I want to read one paragraph Right. of the my lord NTA additional reply, page 6. Lord, NTA additional reply. In my case, my lord. Transportation of question papers to custodians. I'll just read it and But I am not Then adversarially, this would help you also. Unless let us please let me read it and then All right. Where is the NTA additional reply page? page 6, my lord, 958. which deals with NTA additional reply, my lord. This is 10th of July. PDF page 953 in Vanchika Yatram transportation. This is 10th of July, my lord, in Vanchika Yadav affidavit. Yes. Lord, may kindly see page 6 bottom. They're talking of Roman 8, transportation of question papers to custodians. The sealed trunk was handed over to a reliable all India logistic company for transportation and when dispatched based on distance of examination center across the country. The sealed iron trunks for Hazaribag, Jharkhand were dispatched on 28th of April 2024. The authorized company loaded the sealed iron trunks into a dedicated closed body vehicle and an electronic lock was put on the door along with one-time seal. The moment of this vehicle was tracked by the logistic company. The truck has also the digital log with a checker giving real-time information. Just a bit, please. Mitya, they are basically talking about transportation of question papers to the custodians. ठीक है, वैसे तो ये बोल रहे हैं 7 लेयर ऑफ हमारी सिक्योरिटी थी, ठीक है, 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटी थी. अब ऐसा आ रहा है कि 28 से लेकर 3rd के बीच में पेपर कहीं ना कहीं तो लीक हुआ है, किसी गलत ऑथराइजेशन के पास पहुंचा है. ठीक है, हजारीबाग का इसीलिए मेंशन किया गया कि बाकी के तो इंडिया में 24th से लेकर 24th को डिस्पैच हुए, 3rd में को पहुंच गए, बट हजारीबाग में 28 अप्रैल को डिस्पैच हुआ वहां के लिए एंड 3rd में को पहुंचा. ठीक है, तो द एलिगेशन बेसिकली इज कि 28 से 3rd के बीच में कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, चोरी हुआ है, गलत जगह गलत हाथों में पहुंचा है एंड वहीं से बेटा फिर पेपर जितने भी लोगों ने देखा है, जो पकड़े भी गए हैं, वहां तक पहुंचा है. ठीक है, 28 से 3rd के बीच में, राइट. बेटा युद्ध मैं कहां से करवा सकती हूँ? दे आर लुकिंग एट द फैक्ट्स, दे आर लुकिंग एट द नंबर्स. जो वो कहेंगे वही बेस्ट, मतलब दे आर ऑल्सो टेकिंग देयर टाइम एनालाइजिंग ऑल द सिचुएशंस एंड फिगरिंग आउट कि 28th ऑफ अप्रैल और 3rd ऑफ मई के बीच में एक्चुअल में हुआ क्या है. ठीक है, बिकॉज द एलिगेशंस आर इसी समय लीक हुआ है. यस, तभी बेटा जी जो जिन्होंने लीक करवाया है पेपर, मतलब ऐसा अलेज किया जा रहा है कि उनके पास पेपर 1st और 2nd मई तक पहुंच गया था और हमारा एक्चुअल एग्जाम था 5th ऑफ मई को, है ना. यस,
तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि सच में 28 से लेकर 3rd के बीच में पेपर लीक हुआ है एंड 1-2 तारीख तक उन तक पेपर था, 1-2 तारीख बहुत पहले होती है यार, मतलब 4 दिन का समय था, तो ये मास लेवल को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है, मास लेवल को इंडिकेट कर सकता है ये चीज़, अगर मतलब इतनी जल्दी पेपर पहुंच गया है। अगर जैसे पिछली बारी वाली जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी उसमें था कि एक दिन पहले ही पहुंचा और सुबह ही मिला, कि 2 बजे पेपर होता है, सुबह ही उन तक मिला, लेकिन अभी ये बात नहीं हो रही है। अभी इनफैक्ट ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि 1 मई 2 मई तक ही पेपर उन लोगों के पास था, तो अगर 4 दिन पहले पेपर उनके पास था तो 4 दिन में तो मेरा बहुत कुछ हो सकता है, 4 दिन में बहुत जगह भी फैल सकता है, इट इज नॉट कि सिर्फ उसी जगह पे हो रहा है, 4 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर ये प्रूव हो जाता है तो इट विल स्टार्ट इंडिकेटिंग मास लेवल लीक, है ना, इससे मास लेवल हो सकता है, क्योंकि पिछले वाले तक तो सिर्फ हमें था कि सुबह पहुंचा है पेपर, 5 मई को सुबह उन तक पेपर पहुंचा है या 4 मई नाइट को पहुंचा है, तो उनके पास इतना समय नहीं होगा इसको याद करने का या इसको फैलाने का, और सोशल मीडिया को तो पहले ही नकार दिया था कि सोशल मीडिया पे तो नहीं पहुंचा है। लेकिन अब इसके थ्रू ये जो हमारे एडवोकेट हैं वो ये चीज बोल रहे हैं कि पेपर जो है 28 अप्रैल से लेकर 3 मई जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम था हजारीबाग, उसके बीच में कहीं ना कहीं चोरी हुआ है एंड उस तरीके से पहुंचा है, ठीक है, राइट, हजारीबाग, राइट, क्योंकि बेटा 3 मई को तो पेपर बैंक में था, राइट, और 1 और 3 के 28 और 3 के बीच में ही कुछ ना कुछ हुआ है, 5 तारीख को आपका पेपर हुआ, 3 तारीख को पेपर बेटा बैंक में था, राइट, समझ रहे हो, तो आपके पास जो विंडो है इसको स्टील करके लीक करने की, तो वो बहुत कम विंडो है, 28 to 3 की आपके पास विंडो है। तो व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग दोज ड्यूरेशन कि 28 से 3 के बीच में ऐसा क्या हुआ और पेपर फिर वापस भी पहुंच गया है एंड 5 मई को पेपर कंडक्ट भी हो गया है, तो 4 मई की रात को बच्चों को पेपर कैसे मिला, राइट, तो ऐसा क्या हुआ 28 तारीख और 3 तारीख के बीच में। देखो ना कितनी अजीब सी चीज है, इट्स लाइक अ मूवी केस, जैसे सीबीआई में हम मूवीज नहीं देखते हैं, थ्रिलर मूवीज और सस्पेंस मूवीज, कि ऐसा क्या हुआ उनके बीच में, है ना, उन्होंने खुद ही बेटा अपने आप को म्यूट कर दिया। तो लेट अस सी गाइस कि 28 मई को पेपर चला था ट्रांसपोर्ट होने के लिए, 5 तारीख को हमारा पेपर कंडक्ट हुआ, 3 तारीख को पेपर हमारे बैंक में थे और 4 तारीख को पेपर पहुंच भी गया बच्चों के पास। ऐसा कैसे हुआ, मतलब 28 से 3 के बीच में कहीं ना कहीं तो पेपर गया है, जिसके वजह से 4 को बच्चों के पास वो पेपर पहुंचा गया एंड उसको लर्न कराया गया। अब वो कितने लोगों तक पहुंचा, कितने बच्चे थे, यही क्वेश्चनेबल चीज है। वही उन्होंने बोला कि अगर लिमिटेड स्टूडेंट्स थे तो हम मास लेवल लीक नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि टेंटेड कौन है अनटेंटेड कौन है, यानी कि इसका बेनिफिशियरी कौन है कौन बेनिफिशियरी नहीं है, तो बेटा जी प्रूव हो जाएगा कि मास लेवल लीक है। और अगर कहीं ना कहीं ये प्रूव हुआ है मास लेवल लीक है, तो बेटा आपका रीनीट होने के फिर चांसेस आपके बनते हैं, राइट, फिर चांसेस बेटा जी आपके बनते हैं। Body vehicle electronic locks, and on 3rd of May this paper trunk was found to be traveling in an e-rickshaw open to sky being delivered at the Oasis school, and there is a photograph on record shows the principal, who has now been arrested by the CBI, is receiving the trunk, not the SBI bank but the Hazaribag school principal. The affidavit before this honorable court is factually incorrect and doesn't even capture that basic part. Here they say on 3rd of May, page 7, the last bullet of this para, the sealed iron trunk were delivered to the concerned custodian SBI Bank at Hazaribag, Jharkhand on 3rd of May and was kept in a safe vault by the bank. The bank received the trunks and gave an acknowledgement to the logistic company. Now, straight away, allow me to come to my supplementary submissions, which I have placed even the photographs on record, showing that where this trunk was being taken in an e-rickshaw, open to sky with one driver. Can you now formulate your submission? You're saying that now, you've seen now the broad lay of the matter. Your contention is the leak is absolutely widespread and systemic. One.
It Now, happened. how do you formulate your submission? What I say is, because this honorable court pertinently asked them a question. No, but just formulate it. Just formulate. We're not able to My get your point now. We've seen the broad. There plan. is a systemic failure in conducting the examination by NTA, and the multiple failures, if I enlist, the failure is multi-dimensional, and if I enlist serial wise, Yes, just tell us. yes, the transportation of the question paper got compromised when for 6 days the question paper remained in the hands of a private courier company. And in support, I have to say about the evidence on record indicating that the question paper for this examination was being transported in an e-rickshaw 2 days prior to the examination At Hazaribag, no? at Hazaribag on 3rd of May. And instead of it being taken to straight away to the bank, probably there was no clarity on the direction where the question paper will go. So the e-rickshaw driver took it to the Oasis school. No, that's not what it If your lordship, I will read that. I will read it. lordships read the caption below the picture. My little friend is perhaps not reading that. Where are you reading? That's the same picture which is being displayed on the Let me read just one news item and show this newspaper. Page 12 of my written. Just a minute. My supplementary submission, may kindly have for a moment. That will clinch it. That only I am reading. Just read. Allow me to read. He says that these are the question papers, but picture shows My lord, may kindly see page 11. My lord, may just OMR sheets. OMR sheets after the examination. third of May. Lord, may allow me to just to first read, my lord, annexure B at page 11 of my supplementary submission. This therefore news item, and then the photograph, my lord, I will show that. Incorrect version of the situation may not be. My affidavit is with regard to. Sudan, now you have to formulate what your point is. You said Yes, my lord. there was a systemic failure of NTA in conducting the examination. One, transportation was compromised. The packet remained with a private courier company for 6 days and transported in an e-rickshaw at Hazaribag on 3 May 2020. 3rd of May 2000, which was received by the principal, and instead of the custodian, that is the SBI. And now the information with us is that this principal of Hazaribag has been arrested for being a conspirator in the leak. He was part of the NTA. He was a city coordinator. Then what is the next point? The next point is the dissemination of the leaked paper was happening from 3rd of May itself, and the evidence of the chat on the Telegram, etc., indicate that the sold paper was being circulated on 4th of May, not 5th of May. Where do we get that? Lord, with regard to that, Lord, I have two submissions. One, Lord, in my submission, what I had said was that there is a flame blare channel which had disseminated the sold paper. Where is that? Lord, a question paper. Lord, that I have, Lord, if I can straight away show my first note, Lord, I have said it. They have responded to my first note, thankfully, and they are not commenting on that. I want to read, Lord, page 6 of my first note. Where is the first note? Lord, 10th of July note, which was in deference to my Lord's direction that it should be one comprehensive note. Where I say, my Lord,
बेटे ये वाली ई रिक्शा नहीं है मेरे पास, अलग वाल थोड़ी अलग ई रिक्शा, आई हैव द इमेज ऑल्सो जो वो रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मुझे उसका सोर्स पता चल जाए, मैं आपको इमेज पे दिखाऊंगी कौन सी ई रिक्शा। बेसिकली इट्स नॉट एन ई रिक्शा, इट्स अ छोटा टेम्पो काइंड ऑफ ए थिंग, छोटा ऑटो जिसमें पीछे ओपन में पेपर जा रहा है ट्रंक्स में, विच इज वेरी आई मीन वियर्ड थिंग कि इतना बड़ा पेपर ऐसी चीज पे नहीं जाना चाहिए, अगर ये सच है। Locate that. There's one principal note, Millard, which we submitted 10th of July. Heading reads as relevant list of dates. No, the written submissions which we have filed on 10th of July. It's a combined written submissions. We have the collated one, Millard. There are only two, I believe. You filed replied yesterday for that note also. Yes, we filed reply also to that note. Yes, filed a reply to that note. Yes, but there is a one heading systemic failure. This compromise the sanctity of examination. अगर ये ई रिक्शा मतलब जो इमेज मेरे पास आई है सच में इस पे पेपर गया है, तो मुझे नहीं पता इस पे 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो एनटीए की टीम बात कर रही है, एनटीए के लॉयर्स बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। Question paper was circulated on a telegram channel one day prior to the scheduled examination on 4th of May 2024 at 12 a.m. This breach of security has raised significant concern regarding the integrity of the fairness of the examination process. Given the nature of social media and modern communication platform, it is impossible to accurately determine the full extent of leak and identify all beneficiaries. Information shared on social media spread rapidly and uncontrollably, reaching an extensive audience within a very short period. This phenomenon makes it extremely challenging to segregate the pinpoint the individuals who may have gained unfair advantage. Screen recording of a handle named Flame Player. But we have this video. Now, in response to this pleading, they have filed a written note yesterday. They don't talk about it. They don't comment on it. See, the only thing is which you have to bear in mind as a matter of robust common sense. The idea of somebody who was doing this was not just to make a national charade of the NEET exams. The people who are doing it were in it for money. Correct, correct. Right? It is not people who wanted to sort of bring the whole exam into disrepute. Correct. What you would do to bring the whole exam into disrepute is to have a massive dissemination. This became public. So Only after why the would, examination. right? Somebody who was doing it admittedly, as it now appears, to make money out of the process. Yes, Therefore, anybody who is making money out of it, he would not circulate it on a mass scale unless he has that network to also connect with other people. That you have, say, 10 people across in 10 different cities in the state who are all involved in the leakage and being part of the conspiracy to make money. Yes, I know. So, is it your case? I mean, we have made a note of that point that this was circulated on Telegram on early morning on the 4th of May. 4th of May at 12:02 12:02 a.m. Yes, sir. So the whole of 4th went. Correct. All of 4th and then on 5th, because the examination is on 5th at 2 p.m. in the afternoon. It's actually, my friend is not correct. We have replied to this in our additional affidavit also, as well as written reply. When was it actually put on the Telegram channel? Telegram channel, our stand is it is a doctored video. Edited is shown in the picture itself, which we have placed on record along with our. But this is another thing. And the time is completed. If I can complete. Please. 5th May, 1740 is the time of this minutes video. Not this one. This After after let him show minutes that video he is talking about. We have got the Telegram channel has an inbuilt feature. If you made some changes or you temper with it, then that change is also reflected. And therefore, we came to know that this was somebody had
circulated after the examination. Yes, well, I will show that video and what they are trying to say and demonstrate that it is factually incorrect. 1740. Yes, if I can, my lord, straight away invite my lord kind attention to NTA additional reply, my lord, what the Learned Solicitor General is saying. Page 24 of NTA additional reply, my lord. There is, this is another Akash test series they have bought. We didn't know this, but they say there was another channel which was circulating. And they say this circulation happened post the examination. And what is the basis to say so? Let me explain it, my lord. Kindly see page 24 of this NTA additional reply. Now, my lord, this is the original screen at page 1, page 24, which shows paper of India. No, my lord, this is additional affidavit of NTA. My lord, it is a screen like this, my lord, may I see this? It will be a screen like this. Page 24, my lord. Annexure A2. 976. Annexure A2. Yes. Now, my lord, kindly see the second half of it, where date May 4 is written. And Right. then there is a paper being shown in this chat. Now, at the bottom of it, my lord, that red circle, they say this is edited. This is edited. But paper is being shown on 4th of May on this Telegram channel. The date is appearing on the top, and at the bottom of this document, kindly see the circle they have done it for facility. Circle indicates what? The answer. Yes, circle, they say, indicates that this message is edited. 901. And so maybe time is edited. This is their argument. And the real time is, kindly see the next page. They say this is the real time. Now I will explain. From page 25, they say the time is 5/5/2024, 1540, 1740. There is a fundamental flaw in this argument. One argument is, my lord, whenever a Telegram channel document is pressed for edited, it can swap the document, but the time will remain the same. It can't change the time. I have tried it myself, my lord, with the help of my all colleagues. If on a Telegram channel I receive a document, I want to edit it, I can swap the document, but the time will not change. This is one. They say the time is changed, which is impossible. Now the next page 25, the time they are giving is not the time of receipt of a document. It is a watermark. हाँ जी बेटा, तो टेलीग्राम वीडियो की बात कर रहे थे। एनटीए ने तो पिछली बारी बोल दिया था कि मैंने जो टेलीग्राम वीडियो जिसकी तुम बात कर रहे हो जहाँ पेपर लीक हुआ वो तो फेक है, उसमें तो तुमने क्या कह रहे, डेट और टाइम दोनों एडिट कर दिया है। वहाँ पर डेट थी 4th में, जबकि एनटीए के अकॉर्डिंग जो टेलीग्राम का एक्चुअल डेट होना चाहिए 5th में शाम के 5:40 यानी कि 17:40 होना चाहिए। लेकिन ये जो दूसरे हुडा साहब हैं बोल रहे हैं कि टाइम चेंज हो ही नहीं सकता है टेलीग्राम वीडियो पे। दे आर सेइंग टेलीग्राम चैनल पे आप टाइम चेंज नहीं कर सकते, आप बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने टाइम कैसे चेंज कर दिया, तो दे आर क्लेमिंग दैट द टेलीग्राम वीडियो इज नॉट फेक। टेलीग्राम पर एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। बट उस पर जज साहब ने भी बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट बोला है कि अगर कोई पर्सन लीक करना चाहता है तो उसकी इंटेंशन पैसा कमाना होगी, उसकी इंटेंशन समाज सेवा तो नहीं है कि मैं टेलीग्राम पे डाल दूं और सारे बच्चों को मिल जाए और सब बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लें। उसका इंटेंशन वॉज टू अर्न मनी। तो अगर पैसा कमाना है तो उसको ओपन प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम जैसे ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला जा सकता है।
तो वो फिर चीज़ टेलीग्राम पे कैसे आई, अगर वो पैसा नहीं कमाना चाहता था तो उस पे बेटा जी अब आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं एंड दे आर फिगरिंग आउट कि जो टेलीग्राम वीडियो है, कैन दिस बी एडिटेड और नॉट, कैन वी चेंज द टाइम और नॉट, कैन वी चेंज द डेट और नॉट। तो ये तो टेलीग्राम तो यार आप इनसे ज़्यादा जानते होगे, मुझे लगता है कि नहीं, तुम लोग टेलीग्राम इससे ज़्यादा जानते होगे। तो तुम बताओ कमेंट में कि कैन वी चेंज द टाइम ऑफ एनी वीडियो इन दैट चैनल और कैन वी चेंज द टाइम ऑफ एनी पोस्ट। वो कह रहे डेट फॉर्ज हो सकती है लेकिन टाइम फॉर्ज नहीं हो सकता। तो एनटीए का जो क्लेम है कि टेलीग्राम वीडियो, एनटीए ने क्लेम किया ना कि टेलीग्राम वीडियो फेक है, वो कह रहे हैं वो क्लेम गलत है, टेलीग्राम वीडियो फेक नहीं है अकॉर्डिंग टू एनटीए। एंड जो दूसरे पिटिशनर हैं वो बोल रहे हैं टेलीग्राम वीडियो इज ओरिजिनल, क्योंकि आप उसमें टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। मुझे नहीं पता बेटा टाइम चेंज पॉसिबल है नहीं, मैंने इतना मतलब कभी ट्राई नहीं किया टेलीग्राम पे। बाकी जो बच्चा मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा हुआ वो जुड़ जाए, सीप पाहुजा बायोलॉजी के नाम से ही टेलीग्राम है, 3,80,000 से ऊपर बच्चे हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे कि किस तरीके से डेट चेंज होता है कि नहीं होता है। अब इन्होंने बेटा खुद ही म्यूट कर लिया है, वापस आएंगे तो बताएंगे। अच्छा, आपको लगता है टाइम चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा टेलीग्राम चैनल इधर उधर के देखते होगे, है ना, और आप चलाते भी हो, आधे से ज़्यादा तो आप हैकर हो, है ना, बहुत सारे बच्चे हैक भी करते हैं। एक बच्चा कह रहा है साइबॉट कह रहे हैं गेमिंग वी कैन चेंज, कह रहे सिंपल एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रियांशु कह रहे हैं उससे चेंज हो सकता है। नहीं बेटा आज क्लास नहीं होगी। आरुष कह रहे हैं टाइम कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके, कह रहे हैं आई एम द एडिटर, टाइम चेंज हो सकता है। अब यही तो क्वेश्चन है, उसी पे शायद डिस्कशन चल रही है, तभी उन्होंने म्यूट करके रखा है कि एक उस निष्कर्ष पर पहुंच पाए कि टाइम चेंज हो सकता है नहीं हो सकता। अगर तो टाइम चेंज हो सकता है तो एनटीए इज राइट, एनटीए का कहना बिल्कुल ठीक है कि फॉर्ज्ड है वो गलत है बिल्कुल, उसमें डेट टाइम दोनों चेंज है। लेकिन फिर जो हुडा साहब है, जो दूसरे पिटिशनर हैं, जो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लीक हुआ है, कुछ ना कुछ सिस्टेमिक एरर हुआ है, वो गलत हो जाएंगे इस केस में। अब लेट्स सी, मुझे लगता है तुमसे थोड़ा सा वो ले लेना चाहिए, हेल्प ले लेना चाहिए, राइट है। और जो ई रिक्शा की बात हो रही थी, देयर इज अ न्यूज़ चैनल विच हैज़ कवर्ड, मैंने अभी वो न्यूज़ भी देखी है, उस पे जो ई रिक्शा दिखाई गई है, अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट एन ई रिक्शा, वो एक मोटराइज्ड ही व्हीकल है जिसमें पीछे ओपन होता है, ऑटो टाइप का, मतलब पीछे ओपन है एंड द पीपल दे आर कीपिंग नीट का पेपर इन द ट्रंक्स। मुझे नहीं पता उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, बट मुझे इमेज देखकर तो लगा ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पेपर जो 24 लाख बच्चों के पास जा रहा है उसको हम इस तरीके के ओपन ई रिक्शा, मतलब देयर इज नो छत, इवन कोई छत नहीं है बेटा, बस जो ड्राइवर होता है उसके ऊपर ही कवरिंग है और पीछे ट्रंक में पेपर जा रहा है। तो अगर वो सच में इमेज इज करेक्ट तो किस 7 लेयर सिक्योरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब उसमें से तो आसानी से कोई भी पर्सन वो ट्रंक उठा के अपने घर ले जाए। अगर वो नीट का पेपर है तो उस पर ताले लगाने से भी कुछ नहीं होगा, नो लेयर ऑफ सिक्योरिटी वाज देयर इफ दैट इमेज इज रियल। और मुझे रियल लगती नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इतना बड़ा ब्रीच इन सिक्योरिटी, इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली टू हैपन। बट अगर ऐसा हुआ है तो ये तो मतलब बहुत ही गलत है, बहुत गलत है कि अगर आप उस ओपन प्लेटफॉर्म में बिल्कुल रिक्शा की मदद से वो लॉक लगे हुए ट्रंक लेके जा रहे हो जिसके अंदर पेपर पड़ा है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं एडवर्ड? एडवर्ड क्या बोल रहे हैं? एडवर्ड बोल रहे हैं द डेट एंड टाइम कैन बी चेंज, द स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैन बी एडिटेड। मुझे भी ऐसा लगता है एनीथिंग कैन बी एडिटेड। आजकल डीप फेक का जमाना है, आप देख रहे हो सेलिब्रिटीज की कैसी कैसी वीडियोस बनने लग गई हैं, तो एक टेलीग्राम वीडियो को एडिट करना, उसको प्रेजेंट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी मुझे लगता है, मतलब इट कैन बी एडिटेड, जितना मैं मतलब नॉलेज समझती हूँ। बाकी मैंने टेलीग्राम पे खुद ट्राई नहीं किया, मुझे नहीं पता कि वहाँ का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, बट मुझे इतना पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी वीडियो एडिटिंग स्किल्स, ग्राफिक्स इतने आगे पहुंच चुके हैं कि कुछ भी एडिट हो सकता है। मुझे आज के ज़माने में लगता है कुछ भी एडिट हो सकता है। आजकल डीप फेक में पर्सन बोल नहीं रहा होता लेकिन उसकी इमेज लग जाती है ऊपर, कितने सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसा हो चुका है। तो अगर डीप फेक बन सकती है वीडियोज़ तो टेलीग्राम क्या चीज़ है यार। बाकी पता नहीं, बाहर की ऐप है, हो सकता है कि अनएडिटेड रहती हो, है ना, हो सकता है, मुझे अब आइडिया नहीं है बेटा। यस, वीडियो में क्या कह रहे हैं बेटा, किसी को नहीं पता रीनीट होगा या नहीं होगा अभी, तो दे आर जस्ट फिगरिंग आउट कि मास लेवल लीक है भी या नहीं है ना, मास लेवल लीक है या नहीं है, अभी वो फिगर आउट कर रहे हैं। ओके, प्रशांत कुमार कह रहे हैं
वी कैंट चेंज, आई विल ट्राई इट फॉर समवन। अच्छा, किसके लिए ट्राई करोगे? बाय चेंजिंग द टाइम जोन ऑफ दैट डिवाइस। अरे ये तो बहुत ही नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो यार, तुम लोग कितने नॉलेजेबल हो, कहाँ से आए हो? तो जो बच्चे जहाँ से भी आए हैं, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, माय नेम इज सीप पाहुजा, ना मैं बायोलॉजी एजुकेटर। आप अगर मेरा पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं नीट का, तो आप लिंक ट्री खोल सकते हैं, ठीक है? इतनी तुमको नॉलेज ये है, कह रहे टाइम जोन चेंज कर देंगे टेलीग्राम का। वाह, टाइम जोन चेंज करके हम लोग टाइम चेंज कर सकते हैं। मैं अगर यहीं पे 4 सवाल फिजिक्स के पूछ लूं, वो नॉलेज नहीं निकल के आएगी, ये जरूर निकल के आ रही है कि हम टाइम जोन चेंज कर दो, आपका टाइम चेंज हो जाएगा टेलीग्राम का भी। वेरी नाइस। हम्म। यस, अरुण जवन कह रहे वी कैन एडिट इट बाय एडिटिंग बट वी कांट चेंज इट। एक पर्सन तो कह रहे चेंज कर सकते हैं टाइम जोन चेंज करके। ये नई चीज है, बहुत नॉलेजेबल हैं इनसे। अभी मैं फिजिक्स का क्वेश्चन पूछूंगी, फिर मुझे पता चलेगा कितना आता है इनको। टाइम जोन की नॉलेज तो बहुत आ रही है, टाइम जोन पे ही सवाल आएगा अब अपना। एक यहाँ पे कह रहे हैं आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कैन नॉट चेंज द टाइम ऑन टेलीग्राम। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि समय नहीं चेंज हो सकता है। डॉक्टर दिशा, किसी को नहीं पता आज फैसला आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए, मतलब इट्स बिन टू लॉन्ग नाउ। दे आर स्टिल इन अंडर डिस्कशन। वो तभी ऑन नहीं कर रहे हैं बेटा अपनी ऑडियो को। हो सकता है, बट ना कोर्ट जितना मैं जानती हूँ 4 बजे तक चला था पिछली बारी। मुझे नहीं पता आज 4 बजे तक चलेगा या 5 बजे तक। और इतने सारे केसेस, इफ आई लुक एट द केसेस, अभी हमारा केस नंबर 7 चल रहा है ना। दे आर बैक। Telegram page 24 indicate that on 4th of May, question paper is being circulated. The photograph of the question paper appearing, we have compared it with the original. It is this original question paper. The date shown on the top of it is 4th of May and the time is 9 a.m. Now they want this honorable court to disbelieve this date and time with the next page showing. May kindly see the next page. Next page, page 45 is not the date and time which can ever appear like this in a Telegram channel. It is a watermark. If I click a picture, and I click a picture, 9 a.m. Now they with the date and time on, I photo it, then it will appear that the photo is taken on this time and this date. Can you see the watermark? It's not a date and time appearing on the telegram. Date and time appears like the one it is appearing at page 24. This is how they want this honorable court to believe this. And this is something other than the flame player, which we have found and seen the video. What else now? Yes. Now, with this, allow me to come back to Hazaribag, just one news item to demonstrate that how it is an admitted thing, almost admitted thing that the paper is late on 3rd of May. Allow me to come back to my supplementary note for a moment. Page 12 of my supplementary note. That is essential. Allow me to read that. Page 11. Yeah, my supplementary note. I have only 2 notes. One the main note and the other is supplementary note. गाइस, कोर्ट की प्रोसीडिंग सिर्फ 3:35 तक है, 3:35 एंड इट इज ऑलरेडी 3:02। आधे घंटे का समय सिर्फ। Yes, yes, page 11. Allow me to read this news. The Central Bureau of Investigation probing the NEET UG paper leak case on Friday arrested 3 persons, including principal of so and so, vice principal of the OSS school Hazaribag, and interrogated 13 suspects arrested by Patna police at so and so jail in Bihar capital. The CBI sleuths also visited so and so with 2 accused to explore the potential involvement of Rocky, nephew of Allah's mastermind Sanjeev Mukhia, in the case. The principal and vice principal of Hazaribag school, one of the center for the exam conducted on 5th of May, were arrested after 3 days of the questions involving more than 60 hours over the allegations of tampering of question papers. The identity of the third person could not be ascertained till the time of filing of this report. 3 arrested persons will be produced in CBI court in Patna. CBI had seized cell phone, laptops,
school CCTV camera footage with the assistance of forensic experts on Tuesday. According to sources, the CBI uncovered crucial evidence from the 3 months call records obtained from Huck's phone, which led to his arrest. Huck, who served as the district coordinator for NEET, had earlier expressed concern about a potential leak originating from a private courier company, and the SBI that the breach might have occurred at their end. The CBI, which was initially concentrating on the route from the office of the private courier firm at so-and-so to CBI main branch, Julu Park, shifted its focus after analyzing CCTV footage. The footage confirmed that no tampering occurred along this stretch, leading to CBI to suspect Huck, who consistently provided the same response during questioning. Sources told TOI that CBI's attention turned to Oasis School, located on Mandai Road near Kalu Chowk, and its staff. The agency began gathering digital evidence and uncovered that e-rickshaw had gone directly to Oasis School on May 3, instead of proceeding to the CBI main branch, where it was supposed to be stored in the strong room. CBI sources said that at the school, the aluminium box was tampered with and the packet containing the question paper was removed. A glue stick was used to reseal the package containing the question paper. The Economic Offences Unit, which had been investigating the case before it handed over to the CBI, also corroborated these findings according to the sources. Allow me to skip this. Now kindly see the next page, at page 14. I'm sorry, this is page 14, and then 15 is this e-rickshaw and the principal of the school who has been arrested now for tampering with the trunk and seal, etc. Page 15. But this is the e-rickshaw. In the affidavit, they said that it is all sealed vehicle, covered and sealed vehicle, guarded, and where all sort of security. Now, this is how He's saying कि ई रिक्शा को जहां पेपर लेके जाना था वो वहां नहीं लेके गया, वो ओएसिस स्कूल में लेके गया। और सीबीआई की रिपोर्ट में भी है कि उस स्कूल में जो एल्यूमिनियम बॉक्स था जिसमें पेपर थे उसके साथ टेम्परिंग हुई है, उसका जो ग्लू स्टिक है उसको रिमूव भी किया गया है और वो दिखाई दे रहा है। यानी कि 3 मई को जब वहां पेपर पहुंचे हैं स्कूल में डायरेक्टली, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, डब्बा खुला है, वो जो एल्यूमिनियम बॉक्स है उसमें से पेपर निकाले गए हैं। NEET exam, but how much does each student pay for the NEET exam? 1,700 rupees. reserved category was how much for the reserved category? 3,200 1,700 for the reserved category. general category. 1,700 for the general category and reserved category. 0.33 lakh students into 1,700. How much does it work? Sorry. पूछ रहे हैं कितने रुपए का फॉर्म था? Boxes in an e-rickshaw with one driver. There is no guard. Nobody would pause with a photo, to pose for to be photographed like this if these are question papers. This is a part of the process. When you hand over or take over something, you pause with the receipt, etc. This is OMR sheets, not question paper. It's 1,700 for the general. General EWS, OBC and NCL is 1,600. From the exam, The expense rates. how much do you make in terms of revenue for this? Revenue generation. They are trying to figure out NTA ने कितना पैसा कमाया इस 1,700 रुपए के फॉर्म से. So how much revenue have they made?
तो अब इतना रेवेन्यू जब आएगा मल्टीप्लाई करो यार, तुम लोग करो। 1700 अगर जनरल की फीस है, About 400 crores. Four- and the expenditure 400 about crore. 300 crores. Mr. Solicitor, you engage a private courier company? But your lordships may allow me to show. Look the checks. दे आर सेइंग कि हमने 400 करोड़ कमाया है, लेकिन उससे 300 करोड़ लग गया। In some of the areas where There are CCTV footage is recovered. But I will not show when my turn comes. All right, your Yes, third point now, besides this- what is the third point supplementary? Yeah, but besides this, we have placed on record 161 statements recorded by Bihar Police of the accused, which indicate that the paper was available on 4th. If I can straight away read just one statement, that statement is in. My main note, dated 10th of July. Just one statement. Allow me, to read from there. The reading Anurag Yadav's statement. I'm read, yes. That your translation is wrong. I have got the original in Hindi. I believe Wrong on a very crucial. Hindi. I believe Wrong on a very crucial point. okay. Okay. Must be a mistake. I'm not alleging anything. Okay. So this statement indicates that my uncle dropped me on 4th, right? The paper leak was on 4th. बिहार पुलिस का स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पेपर लीक 4 को ही हुआ है। Because so many people are circulating this material on social media from everywhere, but though the candidates here are less, but the anxiety on a social media and the kind of students who are affected by it, but not coming forward to file a petition before this honorable court, they are supporting all these petitions, and this kind of a material is being supplied, and not even the officers. But the other day, I had placed on record the press note of Bihar Police. The IG Police gave that press note. Now, subsequently, they say they have backtracked. The thing is happening in this case. So let them deny that these are not the correct. This is what they say. In the counter affidavit, they say that this is not a certified copy of 161 statement, and hence it should be discounted from the evidence. ₹1700 का फॉर्म जनरल ईडब्ल्यूएस का, बाकियों का जनरल का, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1600 का फॉर्म। तो ही फिगर आउट व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू दैट एनटीए के लॉयर नहीं बताया। हमने 400 करोड़ कमाया, लेकिन उसमें हमारा 300 करोड़ का खर्चा हो गया पेपर को कंडक्ट कराने में। अब वो बिहार पुलिस का स्टेटमेंट बता रहे हैं कि उससे प्रूव होता है कि 4 मई को पेपर लीक हुआ था, 4 मई को। और जो अगर आप सुप्रीम कोर्ट का उसमें देखोगे तो वहां लिखा है कि बेंच विल सिट अप टू, अच्छा कोर्ट 6 की, हमारी कोर्ट 1 है, कोर्ट 6 की बेंच 335 तक है बेटा, हमारी तो कोर्ट 1 है, तो कोर्ट 1 शायद चलेगा अभी। यस 4 बजे तक पिछली बारी चला था। आई एम नॉट श्योर आज कितने बजे तक चलेगा। तो एक तो ई रिक्शा वाला पॉइंट है कि ई रिक्शा मतलब विदाउट इवन अ छत, अ सीलिंग, हाउ कैन यू कैरी एल्यूमिनियम बॉक्सेस, जो ट्रंक जिसको होते हैं पुराने ज़माने में बेटा, हमारे घर पे भी अगर आप देखेंगे शायद आपके घर पे भी ट्रंक होते होंगे, मुझे एल्यूमिनियम से कलर के होते हैं, तो उन ट्रंक्स में पेपर जा रहा है। एंड आप इमेज देखकर हैरान हो जाएंगे कि, और फिर वो जो फोटो भी खिंचवा रहा है जो भी उसका ड्राइवर है, तो एनटीए इज सेइंग कि वो क्वेश्चन, एक सेकेंड, The leaked question paper was in the leaked mode on the 4th itself. Correct. Not, I would say third, because for a reason. Let me give a reason. As per their affidavit, they say all questions papers were deposited with the SBI and Canara Bank on 3rd of May. Right. And thereafter, it was taken out of the wallet of the respective banks on 5th of May, 8:15 a.m. on 5th of May. And according to them, the leak occurred then. No, they don't say, they are in a denial mode. Now, what I say is, if the leak has not happened during the custody of the banks,
then the leak has either happened on the day of the examination or on third or prior to third. There is no leak between third and fifth because the question papers remained in the custody. Also, I mean, possibly, if the, according to them, the leak takes place sometime on the morning of the 5th, according to them by. Yes, they don't say. They say that the student, what they say that the Students were made to memorize. memorize on the 5th Now morning. that the memorize. One second. If the students were made, according to them, the students were made to memorize on the 5th morning. All right, according to them. If then, why is the chap behind you saying no to everything that I say? We've also read our brief. Sorry. According to them, the students were made to memorize. That means prior to the 5th morning, somebody had solved the question The papers. whole argument, I'm so grateful. If somebody had solved the question papers, it certainly doesn't go to the 5th morning. It has to go at least to the 4th, 5th night, night between the 4th and the 5th. That's right. In which case the leak has occurred sometime prior to the night of the 4th and 5th. I'm so grateful. And So, which means that their question is, when did the papers get leaked? Page 2. तो लीक के बारे में मान रहे हैं कि, लेकिन कह रहे हैं कि 4 की रात को मिला होगा पेपर. they are certain that leak has not happened when the question papers were in the custody of the banks. Then certainly the leak has happened on third or prior to third. Before the questions were given to the, deposit, because before they were given to the bank. correct, that's right. Before they were deposited with the bank. Everywhere in the entire country, their stand is the question papers were deposited with the banks on 3rd of May. And in their custody, it remained in a wallet and no bank officials are accused and have been arrested. There is no allegation against bank officials. By the way, the ordinary course, before the exam, when were they supposed to leave the vaults of the bank? Exam was at 2 o'clock on 15 in the morning. Right. They say that the center head will go collect paper. Now there is another systemic failure. Let me point out simultaneously, like in Bahadurgarh. So the head went to both banks, SBI and Canara Bank, collected paper from both banks, whereas he should have collected paper only from one bank. And this Now tell us one thing. There are two possibilities, distinct possibilities. One, the paper gets leaked before the questions are lodged in the custody of the Canara Bank and the State Bank of India, which means that the leak has taken place before the third. Correct. Third, they were all safely with State Bank and Canara Bank. Correct. The alternate hypothesis is that the leak takes place after they are distributed from the Canara Bank and the State Bank of India and are bound for the centers. Listen, now that is a remote possibility for the reasons, Lord. They Because between 8, going by their hypothesis, between 8:15 in the morning and 10:15 when the students were, according to them, given the papers, it's very unlikely that in 2 hours the questions were solved and then everything, and they were made to memorize. This is impossible. So the alternate hypothesis appears to be more logical, according to you. That the leak occurred even before the question papers were lodged with the. That's right. Thanks. Correct. That is my respectful submission. The State Bank of India and Canara Bank. Unless it is their case that the leak happened when it was the leak has happened between sometime before the third, or on or before the third. Then between the third and fifth, there's a fairly long period of time. That's right. During the period, it was in the custody of a private courier company, where they were taking it into rickshaws and here and there for days together. For days together in private hands. नाउ दे आर सेइंग कि क्वेश्चन पेपर मतलब अगर वो कह रहे हैं कि 5 की सुबह को मिला और 5 की सुबह मतलब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक याद करना, सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है, या 4 की रात को ही मिला तो भी अगले दिन तक सॉल्व करके लर्न करवाना इम्पॉसिबल है. सो नाउ देयर आर्ग्यूमेंट इज कि लीक 3 या 3 से पहले हुआ है. It was 17, but the first NEET exam they conducted in 2019. But
2019 onwards, the questions have always been handled by private companies or private couriers? But in the route, en route, there are checks. And if any courier company or any employee of a courier company tampers with the vehicle in which is transporting the trunks, it would be registered on a real-time basis with digital footprints. I'll be able to show. But how is the digital footprint not available here then? It's not the CBI has investigated that there is no tampering en route. Why not? Anyway, There is no tampering. en route. Then where does the tampering take place? There is no the tampering. Hey, don't laugh. I mean, we are asking a serious question. We are not trying to poke fun at the argument or anything. We are trying to understand it. No, I understand. Anyway, let us. According to you, where does the leak take place? So there is no leak which has taken place. No, okay, where does the breach take place? There is a breach which has taken place where we have the timings, we have the CCTV footage of someone going inside the particular center. That's what I wanted to show to your lordship. So, what time does that take place? Yes, my lord, it is 9. Give me the first report. Lord, it's a part of my. ये एनटीए का आर्ग्यूमेंट है, इसको ध्यान से सुनो. Between 8 to between in the morning 8 to 9:23. The person goes in, photographs the paper, and comes out, and thereafter, my lord, your lordship will find, my lord, investigation. But 1 second. Assuming that happens between 8 and 9:20, we have to test this hypothesis in the ordinary course of things. Yes. According to you, the students got the question paper at about 10 o'clock, 10:15. After it was solved. Is it likely this questions, there are 180 questions, Yes, ma'am. right? Is it possible that in 45 minutes between 9:30 and 10:15, they would have problem solvers preparing the answers to 180 questions and then putting it together for the students in 45 minutes? Look, they got 1 hour and there were 7 solvers. I can't divulge all this information. It's a part of my report. There were 7 solvers. They demarcated 25 questions each. And I can tell you, lordship, why they were required to memorize. But if we are, all of us are sitting in one classroom, the 180 plus 20 questions would be same. But the number of the question would be That's a jumbled up. shuffled. That's right. My question number 1 would be his question number 8. So nobody can give a answer sheet ready that A answer is B, B answer is C. They will have to memorize. And so far the investigation has been able to identify 18 students, and because of this lack of time from 10 to 12, because they were asked to go back to the center, they have to report to the center. So it's the whole hypothesis that within 45 minutes to an hour, not only was there a breach, but the entire question paper was solved in a space of 45 minutes, No, and within then 1 hour. the students. Within 1 hour, Used to be very far-fetched. In 1 hour, all that happened. within 1 hour, and there were 7 solvers, and 7 solvers bifurcated questions. So according to you, the leak, the breach occurred when the 8 to a.m. in the morning to 9:23 in the morning. It was taken out. So the papers left the vault at 8 o'clock, 8 to 9:23. So, They didn't have much time, therefore, but what time did the papers leave the vault of the State Bank of India or Canara Bank, whichever bank? 7:30, which is under the videography, we have, under the CCTV, we have recovered the footage, and there is no. So 7:30 they leave the bank. Yes, After that, the paper they is. bring it to the center. What time does it reach the center? 5 minutes. From Hazaribag. 7:45. And since the पटना में भी तो होगा ना कोई पेपर. बेटा देख रहे हो, नया केस आ गया है. एनटीए कह रहा है हम मान रहे हैं लीक हुआ है, लेकिन सुबह 8 बजे 8:02 से लेकर 9:23 के बीच में
कोई आया सेंटर के अंदर, उसने पेपर की फोटो ली और फोटो लेके बाहर चला गया, और फिर 9:23 से It was 8 or 2 to 9:30. Just to show, but I'll be able to show it to your lordship. And that is why, that is the reason why, because the students got only 2 hours to memorize the questions. They'll be able to show that. But out of 18 students who are identified, who were brought at a particular place, only one student is getting possible admission. But of course, now he would be facing the debarment, etc. Only one. But there are about 225 students totally involved. 225. No, but I cannot give the figure, but it would not cross 150. That's our estimate. And I will be able to substantiate these facts, my lord, by the very meticulous investigation conducted. My lord, the person who went inside for the purpose of breaking is arrested. The CBI second report that Lord, I would request your lordship, my lord, to closely scrutinize the CBI appeal, status report. नाउ एनटीए इज सेइंग कि 9:23 पे वो जो पर्सन फोटो लेके बाहर आया था, ये सब 5 मई की सुबह की बात हो रही है बेटा, कि 8:02 पे कोई अंदर गया स्कूल के, 9:23 पे फोटो लेके बाहर आ गया, फिर 10:15 तक वो पेपर पहुंच गया क्वेश्चन सॉल्वर तक। तो जज वाज लाइक कि इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया, तो वगैरह 7 बंदों को बिठाया था, 7 सॉल्वर्स, मतलब 7 टीचर्स होंगे। वो 7 टीचर्स या मतलब एक्सपर्ट्स जिन्होंने पेपर सॉल्व किया, 25 क्वेश्चन हर एक को दिए गए। May I request? May I request in report number 1, kindly read from para 27 onwards. now see report number 2. Yes. Report number 2. Yesterday, no, it was filed yesterday. Would your lordships consider Para 113.8 at page 13. 7 लोगों ने मिलकर पेपर सॉल्व किया और बच्चों को मिले अराउंड 1 to 2 hours टू लर्न द पेपर। Para 113.8. Yes. The total number of candidates so and so from the around so and so. Therefore, my lord, I said that it would not cross roughly, my lord, 150. तो इनके अकॉर्डिंग कि उस लिमिटेड समय में 1 से 2 घंटे के बीच में 150 से ज्यादा बच्चों तक पेपर नहीं पहुंचा है। Route 113.8, 8, my lord. 113.8. Just read it in your mind. Yes. The That's total all. number. आपको क्या लगता है बेटा, 1 घंटे में अगर आपको सारे क्वेश्चंस दे दिए जाएं, क्या क्वेश्चंस लर्न कर लोगे विद आंसर्स? बताओ। Therefore, I said my total would not cross 150. एनटीए कह रहा है कि उनको बस 45 मिनट्स से 1 घंटा ही मिला था क्वेश्चंस को लर्न करने के लिए, क्योंकि वो ऑर्डर तो लर्न नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी लाइक ए बी 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 सी सी, वो तो याद नहीं हो सकता क्योंकि कोड अलग लगाएगा। This is between Patna and Hazaribag. ये बच्चे कह रहे हैं हम कर लेंगे, हमें दे देते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। It is at a distance, but the one gang member who was also at Hazaribag, not sent it by WhatsApp. तो 7:30 बजे क्या था टाइमिंग्स? 2:40. It is my around. And their model is, my lord. मनीषा कह रही है मैम 15 मिनट में कर लेंगे, आप बात कर रहे हो 1 घंटे की। Not to allow students also to take photographs of, because if it leaks, no, they have been given, so kindly, Manoj, this is crucial. The parents have given post-dated checks. Started at what time? Sir, आपको पेड़ लिया है यार। 75 लाख।
तो कह रहे 150 मैक्सिमम तक पेपर पहुंचा है और उन बच्चों ने पेपर मतलब 45 मिनट्स के अंदर अंदर याद किया है, लेकिन 18 बच्चे पकड़े भी गए हैं, 18 बच्चे पकड़े भी गए हैं उसमें, और उसमें से एक कोई एडमिशन मिला, मतलब 17 बच्चे लर्न ही नहीं कर पाए। क्यों ऐसी उम्मीदें करते हो कि नेक्स्ट टाइम हमें दे देना, हम लर्न कर लेंगे? मतलब व्हाई डू यू वांट एन इजी सक्सेस? उन सबका डिबारमेंट हो गया बेटा, हो जाएगा जो नहीं पकड़ा गया। वो कभी कोई पेपर नहीं दे पाएंगे, कभी कहीं एडमिशन नहीं ले पाएंगे, है ना? पकड़े तो जाओगे बेटा। झूठ का रास्ता जो अपनाएगा ना, वो इनिशियली हो सकता है तुम्हें सक्सेस दिखे, बट इवेंचुअली एमबीबीएस में जाके फेल हो जाओगे। अब जो बच्चा, आप सोचिए 18 में से सिर्फ एक बच्चे को एडमिशन मिल रहा है, 18 बच्चों को पेपर मिल गया, लर्न करने को बोला गया, 1 घंटा ले लो लर्न करो, लर्न तक नहीं कर पाए, एक ही बच्चा एडमिशन लेके जा रहा है उसमें से, वो उसका भी एडमिशन ऑब्वियसली डिनाई हो जाएगा। तो वो अगर एमबीबीएस में पहुंच भी जाते, ये 18 के 18 कहाँ एमबीबीएस पास कर पाते? आप खुद सोचिए, जिससे घंटे में 180 क्वेश्चन याद नहीं हो पा रहे हैं, वो कहाँ एमबीबीएस बेटा, एमबीबीएस में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फोरेंसिक्स ऐसे जैसे एग्जाम्स क्रैक कर पाएगा, राइट? तो कहीं ना कहीं तो फंसी जाओगे। ये एग्जाम तुम्हें लग रहा है कि बस एंट्री चाहिए, एंट्री नहीं चाहिए। अल्टीमेटली एमबीबीएस का एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम के बाद पेशेंट को बचाना है, पेशेंट को मारना नहीं है बेटा। जिसको नॉलेज ही नहीं है वो क्या पेशेंट हैंडलिंग करेगा? और ये भी बता रहे हैं, एनटीए खुद बता रहे हैं कि पेरेंट्स ने उन लोगों को पोस्ट डेटेड चेक भी दिए हुए थे कि अगर सच में पेपर मिल जाता है और बच्चे का निकल जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको वो चेक भी पैसे भी मिल जाते। तो एनटीए ने भी माना कि ब्रीच हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं सुबह हुआ है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 बच्चों तक ही पहुंचा है। ठीक है, 150 बच्चों तक ही पहुंचा है। तो अभी इन्होंने म्यूट किया हुआ है, लेट्स सी ये क्या कहते हैं। Once again go through Manoj these 2 reports. Manoj, their modus operandi or business model, Manoj, whichever way we put it, is they ensure that the paper is not leaked and given to students whose parents have given post-dated checks over and above the advance money. So that if it leaks and spread into thousands of people, then the examination is cancelled and they will not get anything. So students were called for the purpose of memorization, were asked to keep their mobiles out. They also purchased, I don't wish to divulge much, it's mentioned there, Malad. Accused are in custody. और वो ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने पोस्ट डेटेड चेक दिए उनको पेपर दिया नहीं गया, मतलब टेलीफोनिकली नहीं दिया गया है। We are not adverse to the petitioners, Malad. वो कह रहे हैं कि बच्चों को बुलाया गया, जिनको मतलब जिन्होंने पैसे दिए थे, उनको बोला अपना फोन बाहर रखो, एंड देवर आस्क्ड टू मेमोराइज, कि यहीं पे बैठ के लर्न करो, हम आपके चेक के बेसिस पे, पोस्ट डेटेड चेक के बेसिस पे आपको टेलीफोनिकली पेपर प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो वहीं पर ही, मतलब उस कैंपस या जो भी जगह थी, वहीं पर वो बोल रहे हैं कि बच्चों को वहीं बुलाया गया, एंड वहीं बोला गया कि तुम यहीं पे बैठ के लर्न करो। देवर आस्क्ड टू मेमोराइज देयर ओनली, भेजा नहीं गया। Solvers been arrested by the CBI? 3 of them yesterday. Today also something has happened. Sorry? Doctor said don't now you say medical students. Earlier you said doctors. Why are you doing this? जो 7 बच्चों को, डॉक्टर्स को, डॉक्टर या मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने पेपर सॉल्व किया, उसमें से 3 लोग अरेस्ट भी हो गए। I don't know what has happened today. It's an evolving situation. Because their investigation will show us when they got the question papers. Because, I'll tell you one thing. अब कह रहे हैं कि सीबीआई ने 3 ही प्रॉब्लम सॉल्वर्स को अरेस्ट किया अभी तक। Between the time when the breach occurred and the time of the exam, Not the more than- shorter it is, the less the likelihood of a widespread dissemination. 2 to If 2.5 if that time period is say 3 days, then obviously that there's a greater danger Obviously. of. If that time period is say about 4 hours, then the only question is. For the petitioners, I am not adversarial to them. Second, Concern is genuine. I mean, you have to also look at it this way. Does somebody pay say 75 lakhs of rupees for 45 minutes? They go into an exam. Not that much also. They will not. It's not, Malad, the figure is also not.
The question is, would they then seek to recover the Para 105, also first report. 105, no? Maybe, my lord, because this is post-dated, yes, my lord. बेटा सीजीआई जो जज साहब है वो सिंपली सही बात बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द थिंग विच मैटर्स इज कि लीक तो हुआ है, अब लीक और पेपर के बीच में ड्यूरेशन मैटर करती है. It is really one of the painful thing. When we went, my lord, I can't share all this, my lord, where we went for interrogation. But some girls' engagement was going. कोई ऐसी बात है जो वो शेयर नहीं करना चाहते ओपनली कि कितना अमाउंट एक्चुअली में दिया गया था पेपर लीक के लिए? दे डोंट वांट टू शेयर. Event which can be identified student-wise, or it is a widespread. Mr. Huda, tell us one thing. Is there any evidence? Or, I mean, we are conscious of your limitations also, because investigation is still going on. Yes, sir. Investigation is still unfolding. Is there any material to take, any material to indicate that a similar pattern was replicated outside Patna and Hazaribag? No. Lord, there is only one instance. No. Lord, in Godhra, that OMR sheet thing, they say that the plot was that the students will leave the OMR sheets unmarked, and in the time between time for examination is over and before it is deposited, the geography lecturer, Mr. Tushar Bhatt, he will do the filling and will deposit it. The common sense suggests that he can't do it as a geography teacher unless the paper is already leaked. He has the ready answer, so that as soon as the paper is given to him, he sit down and do the But mark. Godhra, ultimately nothing happened because the But district they did. magistrate, the But district they did. administration stepped in. That they prevented it by arresting the person before he could do the needful. But the question is, there was people from different states had come to Godhra to let the machination fructify. So the people filled that center pertaining to Karnataka and all other states from the Odisha, Karnataka, etc. How many Godhra? How many students? Just 1 second. Godhra, how many students appeared? In total, the students, but But nobody is getting admission. we can't. Nobody is getting admission. The law should allow me. What has Nobody possibly nobody is getting admission because it never went to successful fruition. That's right. What has But tell us one thing. Totally, Godhra, how many centers were there? Just I mean, we just wanted to. and just in the meanwhile, then what happened in Godhra? Only My just tell learned us friend what is right. My learned friend is right. There was a person called Tushar Bhatt. He was the center superintendent, that in charge of that center. He assured students that you pay me this amount. What I will do is I'll ask the physics teacher and chemistry teacher to fill up the answer sheets. Whatever you can answer positively, you are confident, you answer. Otherwise, leave blank because Tushar, who is Tushar Bhatt? Tushar Bhatt is a city, he is a physics teacher. Center Center superintendent, himself is a physics teacher and geography teacher. If I read correctly, it's a geography teacher. I'll just check up. That's But what we have read. physics teacher and He geography was like the invigilator at the center. He was the invigilator at the center. in charge of the center, but the physics And it is alleged that after the students had filled in their OMR sheets, he would get the three blanks would be filled in by the filled in by him. This information was came to the knowledge of district magistrate and district education officer. But this was There- a month before. But I had shown the email a month before this information was So given. Godhra has nothing to do with the paper leak per se. Therefore, Except that what they are saying is that if the center in charge had made that representation, obviously he had the answer somewhere. what he said was that they are also arrested. But were any of the solved question papers recovered from the center in charge in Godhra? He was not permitted, because the officers came at 2 o'clock. They sat through the exam.
And in their presence, they ensure that everything is sealed and sent. So those who kept blank remain blank. And now from totally, how many students appeared from Godhra? Totally. How many centers were there in Godhra? 2 centers in Godhra. How many total number of students in Godhra? 2513. But how many from outside came? I'm just going to come to it. 2513 in the 2 centers. Now, out of the 2513, how many come within the cutoff for 1.08 lakh seats? बेटा अब ये गोधरा के बारे में बात कर रहे हैं. 2513 2 सेंटर थे, 2513 उसमें बच्चे अपीयर हुए. वहां एक सुपरिटेंडेंट के बारे में बता रहे हैं तुषार सर. How many come within that 1.08 lakh, the last cutoff? 12, my lord. 12. 12. About 18. So, okay, one center 12 and another center about 6. We have given this pattern of mark distribution also. Their performance also is below average. That is that PDF page number 1016. How many students at Godhra out of the 2,513 had come in from, who had changed their centers? See, the 14 could do it. Its application was done by 36. Was not allowed for on account of non-availability. Only 14 were allowed change of center. Anyone getting out of No. Out of 14, nobody is getting admission in there. 1,08,000. Who originally applied, somebody from Mr. Hoda, that even Godhra seems to be a sort of a localized, see, Godhra Issue more than Malota. Godhra, it never went through. In the sense that before they could do anything, there was arrests. Yes, Lord. My submission is not that Right. actually the cheating has happened in Godhra, but I say the leak footprint was not confined to Patna. It came to Paper had Godhra. gone everywhere, and Not there was everywhere. We at least now look, we take your point that there is a likelihood that the leaked answers had traveled to Godhra as well. yes, sir. But Godhra, there is one clear distinction that the students had no opportunity to put their. मैं अभी समराइज करूंगी, वेट करिए, मैं लिख रही हूँ. Where they are not caught, something No, is but Godhra, noticed, no. something is unnoticed. Godhra, nothing. Godhra, there is no wrongdoing at all eventually. Yes. Because before they could, because the process was not the students memorizing the question, but it was the center in charge putting the right dots. But Lord, That never took place in Godhra. Lord, here this honorable court is considering the question whether the leak has a widespread footprint or not. Now, this is one of an indicator that this Mr. Tushar Bhatt had the answers beforehand so that he can do it. So it's a possibility. A possibility cannot be ruled out that he had the sold question paper. ये बेटा नया केस सामने लेके आ रहे हैं कि गोधरा का सबको समझ आ गया या नहीं आया. गोधरा का मैं आपको बता देती हूँ. जितना ये बता रहे हैं कि वहां पर एक सेंटर सुपरिटेंडेंट थे तुषार भट्ट, जिन्होंने बोला कि तुम्हें जितना आता है पेपर उतना कर लो, बाकी के ब्लैंक छोड़ दो, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर को यहाँ बुलाऊंगा एंड वो आपका पेपर जो है वो सॉल्व कर देंगे. ठीक है. बट इससे पहले कि वो ये काम करता, ये बात आगे तक पहुंच गई एंड वो अरेस्ट हो गया. Even physics and chemistry teacher who was supposed to put the dots, to answer the questions, they are also arrested. And with Mr. Tushar, who it's a case of cheating. He cheated the students. That you pay me 10 lakhs, I'll do this. It's a case of malpractice, but it assumes that they had the benefit of the answer sheets. That's right. The solved question paper. That's right. Because those physics and chemistry teachers who were to fill in the blanks, they would not do it on the spot. They would have the pre-prepared swab. Mr. Bhatt said, I would have 3 hours before I seal the answers. So he gave it to the students or parents. That is his representation. That is his representation based upon which he recovered some money. Mr. Huda,
from what we are now, I think we can wrap up your submission because we are. Wrap up कर रहे हैं बेटा. Quickly wrap Now, up in 10 it minutes. appears that Godhra, I don't think we can say is an example of a very widespread I have just case. one thing to point out. But there is no evidence to indicate that actually that scheme went through. In which case, as of now, we find that there is only wrongdoing which has taken place in Hazaribag and Patna. To postulate that, on that basis, then the only thing which we are left with are the statistics. And that 61 students got 720 out of 720. Out of 61 students, as we now know, 44 got it because of that award of full marks, treating both the options of a question as correct. Can we cancel an examination only on that basis? Yes, That's the let point. me very Or is it something which falls short of the threshold which requires the court to cancel an Let me entire examination? very rapidly give me my view. A month before, admittedly, College Kaka, which I pointed out on the first date also, wrote to NTA that College Kaka is a counseling center on 3rd of April 2024, more than a month before this exam. He indicated that this scam of OMR sheets being filled up later is going to happen. Please take care. The email is received on 3rd of April. In their response now, they say the email from the entity College Kaka subsequently has been forwarded by NTA to the appropriate concerned authority for investigation and necessary action. So this conspiracy was already a month before hatched. Now he is saying कि 1 महीना पहले ही अप्रैल में कोई कॉलेज काका करके उन्होंने एनटीए को लीक की जानकारी दे दी थी कि 1 महीने बाद जब पेपर होगा तो इस तरीके से ओएमआर गलत तरीके से भरी जाएंगी एंड देयर विल बी अ पॉसिबल लीक. तो एनटीए को ऑलरेडी पता था और एनटीए ने फिर जवाब में दही में यही बोला कि हमने ऑलरेडी कंसर्न्ड अथॉरिटीज को ये ईमेल जो है वो फॉरवर्ड कर दिया है. अब कुछ बचा नहीं है वैसे बेटा. One more angle. Mr. Bhatt, Tushar Bhatt, would have the question paper from 2 o'clock onwards, not after 5. One of his students can give it to him. And they would start solving it. Thereafter, that was his idea of committing fraud, and therefore he started approaching parents of his knowledge. देखिए जो सीजीआई है उन्होंने गोधरा का केस तो वैसे ही वो कर दिया कि वो लीक का केस नहीं, वो चीटिंग का केस है. हुआ है ऐसा तुषार भट्ट नाम के 30 posted checks. 30 पोस्ट. Yes, my lords wanted to know. Rapidly, my lord, wrap it up. Center was changed, which cases pre-planned and conspiracy. Not even a single candidate has come. Actually, at that कह रहे हैं कि जो गोधरा Story they are giving to the honorable court सुन लो एक बार. that the paper was collected from Hazaribag at 7:30 and 240 kilometer in the transit. There was a breach, and on that breach, everything happened. Paper was I sold. don't think that is the case. Well, It's that's not the case. Mr. Solicitor, is it your case, Mr. Kaushik? बेटा गोधरा का तो इन्होंने क्लियर कट कह दिया कि लीक नहीं था, वो चीटिंग थी. 10 लाख रुपए देके कि मैं आपका पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टीचर से सॉल्व करा दूंगा क्योंकि 3 घंटे होते हैं सीलिंग के बीच में. लेकिन वो पकड़ा गया है और किसी को फायदा नहीं हुआ वहां पर. To one of the gang members. It's a school. नाउ दे आर कंफ्यूज. लीक हजारीबाग में हुआ कि पटना में हुआ है. Right, where this breach happened. But the breach occurred in that Oasis school, according to you. And we have the CCTV footage. The footage before 8:02 a.m. where both the trunks are like this. After 9:23, both the trunks are. And what about the Patna breach? It is linked. Linked to Hazaribag. Under para 50. But therefore, the Hazaribag, the leak occurred in Oasis school, according to you. Yes. But in Patna, how is it linked to Hazaribag? No, the gang was.
If your lordship sees para 50 of my first report. नाउ जज साहब इज आस्किंग कि हजारीबाग और पटना में हुआ है तो दोनों सेम गैंग ने कैसे किया? हजारीबाग का तो वो मान गए हैं कि ओएसएस स्कूल में कैसे, हमारे पास प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज है उनके पास कि बंदा अंदर गया, उसने फोटो खींच के बाहर आया, 7 लोगों को दिया गया सॉल्व करने के लिए, फिर बेटा जी उन्होंने सॉल्व किया और बच्चों को 1 घंटा ही मिला उसको याद करने के लिए, लेकिन उस 18 बच्चों में से एक ही बच्चा पास हो पाया, वो भी उसका भी डिबारमेंट हो गया। अब कह रहे हैं कि हाँ पटना में भी लीक हुआ, तो जज साहब पूछ रहे हैं कि पटना वाला लीक क्या हजारीबाग से अलग था? वो कह रहे हैं एक ही गैंग ने किया है। Yes, and they ensured, my lord, that they purchased a new mobile with a new SIM card, so that there is no further leak. अब कह रहे गैंग सेम था लेकिन उन्होंने नया सिम कार्ड ले लिया था। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, कोई भी पुराने सिम कार्ड से तो बात नहीं करेगा, ये तो मतलब बहुत ही बेसिक है ना? इफ एनीवन विल डू समथिंग लाइक दिस, वो सिम तो नया ले ही लेगा। 45 minutes question paper can be solved. So the primary breach occurs at Hazaribag, Yes, where the questions, the solving also takes place at Hazaribag. It's relayed to Patna and then disseminated at 10:15. So that means between 9:30 and 10:15, the entire 180 questions were resolved. after the Which is the Patna FIR. The Patna police who first launched the FIR question. at 6 o'clock. They say we were tipped off by our people by the police in Hazaribag. We catch that man there. That man tells us that we were on there on the previous evening itself. We were taken to this play school and all this was memorized. And what came in the NEET exam was exactly the same. So therefore, the leak, it has reached Patna on the 4th. No, but the Please read the FIR. Please read the FIR. Please read the FIR Patna is the final copy. The Patna FIR, the Patna police were. Lord, would your lordship? हुडा साहब कह रहे हैं कि पटना में पेपर 4 तारीख को लीक हुआ और ये एनटीए वाले कह रहे हैं कि नहीं 4 को नहीं 5 को ही हुआ है। We have recovered. They have submitted a report, My lord, let's finish, my lord. which is an EOU report to the ministry. That report has not been placed before your lordships because the CBI takes over on the 22nd of June. Or before that, the investigation was done by Patna, by the EOU. The EOU submitted a comprehensive report which is not before your lordship. Your lordships compares that report with what the CBI has done. Many more questions will arise. Look, let me answer questions rather than arising questions. And please don't. Okay, please come on that. We are in the court, not on the screen. Please see. Para 50. Well, that's an unwanted thing from the solicitor general. Anyway, my lord, para 50 at page And that's 90. not, At 10:15 a.m. Mr. Mehta, Anyway. At 10:15 a.m. on 5/5/24, so-and-so received NEET solved exam question paper number so-and-so. The lordship knows, my lord, there was a burnt question paper which was found by Patna police. And burnt question paper had the center number. Question number so-and-so. which Kumar accesses it in OA? अब हमारे हुडा साहब मतलब जो दूसरे पिटिशनर हैं वो ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक 1 दिन पहले हुआ है एंड सीबीआई ने 22 ऑफ जून को टेक ओवर किया, तो कोई एक रिपोर्ट है जो कि मिसिंग है, जिसको मतलब चांस ही नहीं मिला प्रेजेंट होने के लिए क्योंकि सीबीआई ने 22 ऑफ जून को टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, अगर वो रिपोर्ट सामने आ जाती है तो और क्वेश्चंस अराइज होंगे, बट अकॉर्डिंग टू एनटीए ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू एनटीए प्राइमरी ब्रीच हुआ है हजारीबाग में, हजारीबाग से वो चीज़ पहुंची है पटना में, सिर्फ 1 घंटे के बीच में। ये नोट करने वाली बात है, 1 घंटे में। 10:35. तो 1 घंटे में वहां पर मतलब 7 सॉल्वर्स ने पेपर भी सॉल्व कर लिया, फिर बच्चे को भी 1 घंटे मिल गया और वहां से फिर पेपर ट्रैवल होके मतलब टेलीफोनिकली या जैसे भी आया पटना वालों को भी मिल गया, पटना वालों ने भी उसको लर्न कर लिया। तो ऐसा हमारा एनटीए कह रहा है कि जो भी हुआ वो उस 1 से 2 घंटे के टाइम में ही हुआ। मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग टू लिमिट द लीक
टू द डे ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि चीफ जस्टिस ने पहले ही बोला था जो चीज़ मैटर करती है वो करती है कि पेपर कंडक्शन, पेपर स्टार्ट और लीक में कितना समय है। अगर तो वो समय 2-3 दिन का है तो मार्क्स लीक हो सकता है, लेकिन अगर वो समय घंटों में है तो नहीं हो सकता। Each other's legs, but this was unwarranted. Leaving it at that. But half of the question, my lord, paper was received at 10:35. The lordship would find page 21, the photograph. They burnt the question paper because they didn't want that to travel anywhere else because that was their the source of money. But a part was not fortunately recovered, which contains this 6136488. This is the center number of Hazaribag, how many centers were there? 5. 5. Just once, I'll make a note of that. The students were also, my lord, from all over the centers. The leak is at one center, but OS is, my lord, but Centers. Totally, how many students in Hazaribag? one. Yeah, by- So they are now figuring out number of centers and number of students from Hazaribag. निकाल रहे हैं बेटा, लिस्ट निकाल रहे हैं। टोटल 5 सेंटर थे हजारीबाग से, और अब बच्चे निकालेंगे कि टोटल कितने बच्चे बैठे, फिर ये निकालेंगे उसमें से कितने पास हुए, बिकॉज पासिंग रेशो मैटर करता है ना, कि अगर लीक हुआ तो पासिंग रेशो भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, वहां से टॉपर्स निकलने चाहिए। 2736. 736. 2736 बच्चे हैं। Okay, so that's qualified, okay. How many candidates would now fall in that 1.08 lakh? How many of those 2,700 would have qualified for admission? Okay. We will अब जज साहब ने पूछा है कि अगर हजारीबाग से They are not in the first. Can you see, my lord, report of the दे आस्क कि उस 2700 में से कितने बच्चे एक्चुअली में 1 लाख में सिलेक्ट हुए। Colleges, the rest is it. Hazaribag or Patna, my lord, doesn't find place there. So possibly, Let's very few would be, my lord, selected. in the 1.08 lakh candidates, how many? We want to now see, because admittedly there has been a breach at Hazaribag and Patna. it's from all 5 centers. Those who would be able to qualify are around 80 only. 1.8. 80. It's States. यहाँ से भी 80 बच्चे सिलेक्ट हुए बेटा हजारीबाग के 500 सेंटर्स में से, क्योंकि ये मान रहे हैं। Centers in Patna. अब पटना का पूछ रहे हैं, सुनना। But in first 60,000, earlier, in first 60,000, 60, in 2023, Patna had 1993 students. I am reading from the report of the IIT. Now it has come down to 1561 students. First 60,000. Thereafter, my lord, I'll Now this time Patna, how many centers were there? 7 centers. There are 7. एनटीए को बेटा याद नहीं है कि पटना में कितने सेंटर है, थोड़ा समय लग रहा है। 12 centers. And totally how many candidates? I'll give you exact. तो व्हाट जज इज ट्राइंग टू डू इज कि लीक सिर्फ हजारीबाग और पटना में हुआ है, तो वो फिगर आउट कर रहे हैं कि कितने सेंटर थे, कितने बच्चे वहां बैठे और उसमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ। उससे पता चलेगा कि वेदर द लीक वाज फ्रूटफुल और नॉट। अगर तो बहुत सारे बच्चों का मतलब अनएक्सपेक्टेडली सिलेक्शन हो जाता है हजारीबाग और पटना से, मतलब काफ़ी हद तक उस जगह पर तो लीक फैल गया था। लेकिन अगर ज़्यादा सिलेक्शन मतलब मोर और लेस पिछले साल की जैसा ही रहता है तो फिर मतलब इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो कहेंगे कि हाँ लीक इज कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट इज कि लीक कितना हद तक फैला है, तभी वो यही डेटा पूछ रहे हैं। एनटीए को थोड़ा समय लग रहा है पता लगाने में कि हजारीबाग में कितना सेंटर है, कितना बच्चा अपीयर हुआ, कितना सिलेक्ट हुआ, फिर पटना में कितना सेंटर है, कितना बच्चा अपीयर हुआ और कितना सिलेक्ट हुआ। तो यहाँ से वो फिगर आउट करेंगे कि लीक का लेवल क्या था, क्योंकि रिपोर्टेडली दे हैड ओनली 1 hour टू लर्न द आंसर्स,
to send it to Patna people, Patna students then will learn the answer. 1 घंटे में ये लर्निंग किस लेवल तक पहुंची है और कितना सिलेक्शन रेशो आया है वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो ये भी बहुत क्लियर लाइन इन्होंने ये भी बोली थी सीजीआई ने, कैन वी कैंसिल एन एंटायर एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट दिस थिंग, कि आप बोल रहे हैं कि 2 सेंटर पे लीक हुआ है जिसमें से 18 बच्चा को पेपर मिला, 18 में से एक ही सिलेक्ट हो रहा था, वो भी डिबार हो गया और वो भी अरेस्ट हो गया. क्या पूरा एग्जाम इस बेसिस पे कैंसिल कराना ठीक है या नहीं है? अभी तो बेटा इन्होंने म्यूट किया हुआ है, आपस में फिगर आउट कर रहे हैं कि पटना के कितने सेंटर थे, कैंडिडेट्स कितने थे. तो वैसे तो ये डेटा बहुत हैंडी होना चाहिए, बिकॉज बात सिर्फ गोधरा, पटना और हजारीबाग की हो रही है और किसी की बात तो हो ही नहीं रही है यहाँ पर. तो इनको अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि कैंडिडेट्स कितने थे उन 12 सेंटर्स ऑफ पटना में, है ना. तो समय लगता है डेटा कोलेक्ट करने में, तो इसी वजह से इन्होंने अब म्यूट कर रखा है. आई थिंक कि आज तो इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले लेंगे, बिकॉज 4 बजे तो बंद ही हो गया था पिछली बारी. अब मुझे ये नहीं पता, लेट मी सी ये वाला कोर्ट नंबर 1 कितने बजे बंद होता है. मैं इसको रिफ्रेश करके देखती हूँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन है. 5 पता नहीं 4 या 5 बजे है ना. यस क्या कह रहे हैं, मास लीक हुआ होता तो मेरे तक भी पहुंचता. हाँ ये तो बात है. मतलब एवरीवन इज पुटिंग, आई होप अब आप समझ गए होगे कि ऊपर जो एक साइड जज साहब हैं और एक साइड आप देख रहे हो कि आपके पास वो पिटिशनर है जो कहते हैं कि रीनीट होना चाहिए, धांधलेबाजी हुई, और नीचे जो आपको थोड़े ओल्ड एज जजेस दिख रहे हैं वो हमारे एनटीए के जजेस है. ठीक है, वो एनटीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अब कुछ तो बातचीत बेटा जी चल रही है सीजीआई और उनकी टीम के बीच में. जज साहब हैं, तीनों लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द पॉसिबल सोल्यूशन, वेदर टू रिलीज द जजमेंट टुडे और वेदर टू डिले इट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बट अब तक मेरे ख्याल से सब बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि क्या हुआ है. तो एनटीए कह रहा है कि हम मानते हैं कि लीक हुआ है और हम ये भी मानते हैं कि ई रिक्शा पे पेपर गया है टू ओएसएस स्कूल एंड वो एल्यूमिनियम वाले बॉक्स में ही गया है. और जो आपके सामने फोटो आ रही है वो फोटो पेपर की नहीं है, वो ओएमआर और रसीद की है, क्योंकि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि सबको, जो भी ड्राइवर होता है व्हीकल का, उसको एक रिसीट के साथ फोटो करानी होती है. तो वो कह रहे हो क्वेश्चन पेपर नहीं है, उसको डब्बे को वहां नहीं खोला गया है. मतलब जब ई रिक्शा में पेपर जा रहा था तो वो जो एल्यूमिनियम बॉक्स है वहां नहीं खुले हैं, लेकिन एनटीए ने ये माना है कि वो एल्यूमिनियम बॉक्स कहाँ खुले हैं. तो उनके अकॉर्डिंग सुबह 7:30 बजे एसबीआई और कैनरा बैंक से पेपर निकला. ठीक है, 7:45 पे वो सेंटर में पहुंच गया. Continue on Monday Okay. at 10:30, so that we'll take this before we take our. So by lunch we would have concluded the matter on Monday. So we'd like to have a copy of the Bihar Police report. If that can be circulated. EOU. There are two. One is local police. Thereafter, it was transferred to EU. नई डेट मिल गई है बेटा, If they can supply. बट दे आर सेइंग फाइनल जजमेंट है मंडे को. 10:30, and we'll do our miscellaneous board Monday post lunch. Hopefully we'll finish this by lunch. I think, Milord, that you get the Darbara here, I would like to request, Milord. Counseling can be stated because the counseling they have slated. Counseling takes 3-4 months. But Keeping it after 2 days basically. we had to declare counseling, Milord, and it would start from 24th of July or something. Milord, I must bring it to your lordship's notice. It cannot happen, Milord. We are taking it on Monday itself. They're now taking it on Monday itself. Please. Would we consider declaration of the result, because what entire data, what they are talking about, we can't really corroborate it until if they can solve it. They are from the last I time. will satisfy lordships. No examination declares, because this is individual's personal property. Milord, it's UPSC does it. UPSC also does not. UPSC does not. I satisfy. Then why not the My learned friend appears for you. But what if you declare put the results minus the names with only the roll numbers? yes, we will and I'll just comes check and up. center. Sorry? Center and the roll numbers. I would sit with them and examine. But now, Milord, what exercise, Milord, my learned friend wants your lordships to. Or you can even do this. You can have masked roll numbers, so that no identity of a student is disclosed. So you can have masked roll numbers in the sense you can have dummy roll numbers, but in a sequence, center wise. That's it. Why should So that we are also able to apply our mind and maybe assess this honorable court better.
You can mask the center also. No, not center. Center enroll. The identity of the student. There is one. अब उनको बोला है कि रिजल्ट पूरा डिक्लेयर करो, तो कह रहे रियल रोल नंबर नहीं दिखा सकते, मास्ट रोल नंबर दिखाएंगे. To direct the National Testing Agency. We have heard Mr. Huda, Learning Senior Counsel, appearing on behalf of the petitioners. However, during the course of the discussion in court, in open court, we've also had the benefit of brief interjections by counsel on both sides, including by Mr. Tushar Mehta, Learned Solicitor General, and Mr. Kaushik, Learned Senior Counsel, appearing on behalf of the NTA. Full stop. The petitioners have submitted. No, I'm yet to be argued. Yeah. The petitioners have submitted that it would be appropriate if the result of the UGC of the UG 2024 NEET examination is published on the website by NTA, so as to bring about some transparency on the center-wise marks obtained by candidates. No, centers are identified. Sorry. Center and number will not be masked. Without center, in each center, there are 5,000 people. In the center, there will be 5,000 people. We direct NTA to publish the marks obtained by students in the UG NEET 2024 examination, while at the same time ensuring that the identity of the students is masked to preserve. Identity of the center. We make identity. Identity of the students is masked. Something to say. Yes, sir. Center, please let them. You see, because that's the basis on which they may be able to perform. They have analyzed some trends, etc. If they can't, they fail. But at least there's a sense of. Yeah, so we can get exercise from the reverse. Now let us see whether there is any, without any material. They have not shown any material of any material. See, what is happening actually, Mr. Solicitor, what is happening is this. In fact, the reason why we were engaging in a very detailed line of inquiry is because the fact that there was a leak, at least in Patna and Hazaribag now, is A leak. yeah, but there was a leak in the sense that there was a leak. The question papers, the question papers had been disseminated before the exam. That is undoubted. Question which we are now wanting to consider is whether this was only confined to these centers, in which case there's no question of a retest, or whether this was more widespread. Now, the students have a certain degree of handicap because they would never have the kind of data which is necessary to prove. Data goes to the coaching centers, and there are several problems. This is not just the center we are dealing with. No, that's right. There's no difficulty. Therefore, we are not saying that you publish we want the students' identity to be masked because we don't want students to be approached. You can have dummy roll numbers, but in a series for those students, so that no student's identity can be diverged. That is sufficient But- safeguard. But let us see center-wise what was the mark pattern. Yes, that's right. At the end of it, Mr. Kaushik, even if they fail, we will have the satisfaction, they will have the satisfaction of having done their duty. Yes, sir. But if the data does reveal something which has not appeared to us as laypersons, as judges, they will assist us at least. We'll. I'm so grateful. So let me discuss. If there is no difficulty, the losses may not. What is the difficulty? Ensure that is possible. But investigation is concealed from us. The result is concealed. The result should be the result should be declared in relation to each center separately. But we fix at time because ultimately they could. This exercise may be done. This exercise shall be done. Kindly have sincerity. So there are reasons. Let it be Argue that. My lords, they have declared top 100 everything. Center-wise. Yes, it's They have given it to IIT Madras, Lord. They have given their analysis. Madras, but we have given because they are not private. And center-wise, we'll specify at center. No, Lord, your lordship. We will say that this may be the results will be uploaded by 5 p.m. On tomorrow on Friday. Great. Let them have an opportunity to at the end of it we'll see what to do. The center-wise can be deferred in.
No, let it be done. Otherwise, you know, we have to see the end of the matter by Monday. So yes, Mr. Venkataraman. Let's only make it day after tomorrow. It was 24 lakh students minutes. It will take time to compile in that number. Day after. So, click on a button that you can get. We have already by Saturday 12. Well, my lord, there is a great urgency, my lord. It's not about NEET. It's about the, my lord, MSME. And my lord, if I got to pass an order in the morning, my lord. Email. My lord, Or bad circulate an email. That's what we do. My lords, if I may mention an intervention in the current matter, please, Vanshika Yadav, sir. Who's Me, sir. Sir. Yes. Sir, we submitted our document on 16th morning. For some reason, it did not show in listing. This represents students from MP, from rural backgrounds and backward classes who have gone through great hardship to go through that NEET exam. You don't want a repeat, right? Or you don't want We a just retest. want that whatever decision comes, we seek an interim relief, my lords, that if a retest is ordered, in case a provisional counseling can be provided, that would be great. If a retest for any Very reason is premature ordered, at this stage. Very some sort of premature. exemption We are- may be made, sir. we're in the course of hearing the matter. We haven't formed an Sir, so if the application may be kindly taken on record, I'll be very honored. application. You mean your petition? The intervention application, sir, we filed it on 16th itself. However, it has not shown on record. Yes. You can. Applies, sir. Yes, Mr. Venkataraman. Tax is income tax part third bad. Tax we will get on Tuesday. But may only request you not you can take it but ओके सो मैंने इसको म्यूट कर दिया है क्योंकि इन्होंने नीट की बात करनी अब छोड़ दी है. तो फाइनली क्या इन्होंने बोला है, तो आई होप सबको समरी पता है कि व्हाट एनटीए इज सेइंग एंड व्हाट द अदर पार्टी इज सेइंग. एनटीए के भी लॉयर्स थे और अदर पार्टी के भी यहाँ पर लॉयर्स हैं. आई गेस ये अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे. एक बार सुन लेती हूँ मैं. But last time, you know, throughout my career, I followed the practice. Overnight partner come first on board. But you know, this matter. I understand. So if there's a time constraint, your lordship can even adjourn it, but we're not going to anywhere. That's a difficulty. ओके सो फाइनली दे हैव टॉक्ड अबाउट नीट. तो सबको समरी पता है कि क्या है कि नहीं है. ओके फाइनल समरी मैं 1 मिनट में आपको बता रही हूँ. 1 मिनट में बेटा जी समरी बता रही हूँ कि सबसे पहली चीज़, आज कोई जजमेंट नहीं आया है. जजमेंट अब आएगा आपका मंडे को एंड मुझे लगता है वो फाइनल डे होगा जजमेंट का, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है. दे हैव ऑलरेडी लिसन टू एवरीथिंग. तो एनटीए को उन्होंने डायरेक्ट किया है. पहले उन्होंने बोला था कि आप कल शाम तक सारे बच्चों का रिजल्ट पब्लिश करोगे मास्क करके. ऑब्वियसली आइडेंटिटी को हाइड करके करना पड़ता है, तो आप मास्क करके रिजल्ट को पब्लिश करोगे कल शाम तक. बट उन्होंने बोला कि हम सेंटर नहीं बताना चाहते हैं. तो देन दे सेड कि सेंटर नहीं बताओगे तो कैसे बात बनेगी. तो जब इतना कर लिया तो अब थोड़ा और कर लो. सो फाइनल डायरेक्शन ऑफ सीजीआई टू एनटीए इज दैट कि उनको अब सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किस सेंटर में कितने बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं. साथ ही में दे ऑल्सो हैव टू, उन्होंने बोला कि हम आइडेंटिटी कैसे डिस्क्लोज कर देंगे, तो बच्चे की प्राइवेट चीज़ है वो नहीं बता सकते. तो कह रहे हैं आप रोल नंबर को मास्क कर देना, चेंज कर देना थोड़ा सा, बट ऑर्डर शुड बी सेम एंड उसी ऑर्डर में आपको रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा. तो टाइम उन्होंने पहले कल शाम तक का दिया था. देन दे सेड कि हमारे पास बहुत कम समय है, हम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो सैटरडे तक का टाइम है. यानी कि सैटरडे को शाम से पहले पहले अपनी वेबसाइट पे, एनटीए को अपनी वेबसाइट पे सब बच्चों का रिजल्ट सेंटर वाइज डिक्लेयर करना पड़ेगा. लेकिन किसी बच्चे का नाम और रोल नंबर नहीं दिखेगा, वो मास्क्ड होगा. बट एटलीस्ट वहाँ से एक एनालिसिस बन पाएगा कि कहीं किसी सेंटर में से टॉपर्स की तादाद ज़्यादा तो नहीं है, सिलेक्टर्स की मतलब जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी तादाद ज़्यादा तो नहीं है. दूसरी चीज़ बेटा जी इन्होंने क्या यहाँ पर बताई है, मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूँ. तो मंडे को बेटा जी जजमेंट हो जाएगा. मंडे को क्या डेट है एक बार चेक कर लेते हैं. तो फाइनल जजमेंट आई बिलीव हो जाएगा. तो वो कह रहे थे कि काउंसलिंग पर क्या करना है, तो 24 जुलाई को काउंसलिंग है, तो वो कह रहे 24 से तो पहले ही आ रहा है ना, तो मंडे इज 22 जुलाई. तो काउंसलिंग से पहले पहले आपको पता चल जाएगा. दूसरा यहाँ पर फाइनल इन्होंने क्या बोला है, जो चीज़ जो हमारे पिटिशनर थे वो बोल रहे थे कि लीक हुआ है, उनके अकॉर्डिंग गोधरा में चीटिंग हुई है एंड हजारीबाग और पटना के बीच में लीक हुआ है. इतनी बड़ी कॉन्वर्सेशन से ये ज़रूर पता चल गया कि पेपर जो थे वो हजारीबाग में ई रिक्शा पे जा रहे थे. ई रिक्शा कवर्ड ई रिक्शा नहीं है, ओपन जा रहे थे, ट्रंक के बीच में, एल्यूमिनियम बॉक्सेस के बीच में. तो ऐसे कैसे जा रहे थे, पहले तो 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपकी कहाँ गई. तो 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क किया गया कि सिस्टेमिक एरर है उस पर. लेकिन फिर एनटीए ने उसको क्लैरिफाई किया कि हाँ जा रहे थे. और जो फोटो आई है, फोटो बेटा मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, यहाँ नहीं करूंगी. टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल के नाम से, ठीक है. सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए. आई विल शेयर दैट रियल इमेज विद यू ओवर देयर.
वो कह रहे हैं कि वो क्वेश्चन पेपर पकड़ के फोटो करा रहा है, तो एनटीए सिंह वो क्वेश्चन पेपर पकड़ के फोटो नहीं करा रहा, वो ओएमआर है या फिर वो चीज़ है, क्या कहते हैं, रिसीट है। हर ड्राइवर को रिसीट के साथ फोटो करानी होती है, तो रिसीट और ओएमआर के साथ फोटो करा रहा है। वहां पर एल्यूमिनियम बॉक्स जो ट्रंक थे जिसमें पेपर था वो नहीं खोले गए। फिर उन्होंने बोला, ये जो हमारे एनटीए है, एनटीए ने बोला कि हाँ हम मानते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ब्रीच हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हजारीबाग में हुआ है। उनके अकॉर्डिंग सुबह 7:30 बजे, मैंने पूरा इवेंट नोट किया है, 7:30 बजे कैनरा बैंक से पेपर चले और एसबीआई से पेपर चले एंड 7:45 पे वो सेंटर में पहुंच गए। 8:02 पे उनके सीसीटीवी कैमरा में आया, हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के सीसीटीवी कैमरा में आया कि 8:02 पे कोई अंदर गया, उसने उस एल्यूमिनियम बॉक्स को ओपन किया। एल्यूमिनियम बॉक्स ओपन करने पे 9:23 पे वो पर्सन बाहर आया। समझ रहे हो, मतलब 1.5 घंटा तकरीबन उसने सारे क्वेश्चन पेपर का फोटो ले लिया। फोटो लेने के बाद बाहर वो पेपर पहुंचा 10:15 में, और उसके बाद 7 सॉल्वर्स, 7 मतलब पेपर सॉल्वर, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, इनका कहना था, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उस पेपर को मिलकर सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद बच्चों को 45 मिनट्स टू 1 घंटा ही दिया गया टू लर्न दैट थिंग, ठीक है, टू लर्न दैट थिंग। फिर एनटी का कहना था कि ये जो हजारीबाग का लीक है ना, यही वाला गैंग पटना में भी इन्वॉल्व था, मतलब यहीं से पेपर व्हाट्सएप या किसी माध्यम के द्वारा वहां पर पहुंचे होंगे और वहां पर भी बच्चों ने इसी तरीके से इसको सॉल्व किया। नाउ द जज साहब वाज सेइंग कि क्या 45 मिनट्स और 1 घंटे में आसान है उन पेपर, उस सारे क्वेश्चंस को याद करना, क्योंकि आप ऑर्डर थोड़ा याद कर सकते हो, यू कैन नॉट लर्न ए बी बी सी सी, आपको क्वेश्चन देखकर ही आंसर याद करना पड़ेगा। और एनटीए के अकॉर्डिंग ये लीक जो हुआ है वो 150 बच्चों से ज्यादा किसी तक नहीं पहुंचा है। फिर गोधरा का केस आया, उन्होंने बोला कि सुपरिटेंडेंट ने 10-10 लाख रुपए लिए, अप्रॉक्सीमेटली इतना अमाउंट उन्होंने बोला है कि तुमको जितना आता है भर दो, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मैं टीचरों से यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा, मेरे पास 3 घंटे का समय होता है सील करने से पहले, तो सील करने से पहले मैं उनको सॉल्व करा दूंगा। तो यहाँ पर बट उसका वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उससे पहले ही डीएम तक की बात पहुंच गई थी, वो पकड़ा गया था, ठीक है, वो पकड़ा गया था। तो सीजीआई ने बोला कि गोधरा का केस तो रूल आउट कर दो, वो लीक का केस है ही नहीं, वो चीटिंग का केस है, और वैसे भी वहां पर कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो केस कहाँ का बना? अब सिर्फ पटना और हजारीबाग का। इसके लिए सीजीआई ने पटना की जो डिटेल्ड एफआईआर है वो मांगी है। जो पिटिशनर है वो कह रहे हैं कि लीक पटना की एफआईआर में 4 तारीख का है, एनटीए कह रहा है कि नहीं ये 5 तारीख का है, तो उन्होंने एफआईआर की रिपोर्ट मांगी है। दूसरा उन्होंने बोला है एनटीए को कि सैटरडे तक अपना डिक्लेयर करें, वो इस चीज को डिक्लेयर करें सेंटर वाइज रिजल्ट बच्चों की आइडेंटिटी को हाइड करके। तो फाइनली अब जो अगली हियरिंग होने वाली है वो होगी मंडे को, लेकिन वो बोल रहे हैं सुबह 10:30 मतलब 10:30, एंड बिफोर लंच दे विल हैव अ कॉन्क्रीट जजमेंट ऑन नीट एग्जाम, वेदर नीट एग्जाम होगा या नहीं होगा। आज भी उन्होंने इसी चीज पे एम्फेसिस किया है कि सिर्फ पटना और हजारीबाग के चुनिंदा बच्चों तक अगर लीक पहुंचा है तो ऑल ओवर इंडिया इसको री एग्जाम कराना ठीक नहीं होगा। तो तब पता चलेगा कि किस लेवल तक का लीक है, एंड मंडे विल बी द, आई बिलीव एंड आई रियली होप इट शुड बी द फाइनल डे ऑफ जजमेंट। बाकी आप मुझे बताइए, हाँ बीच में इसकी बात हुई थी, रेवेन्यू की बात हुई थी, कुछ बच्चे यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग फॉर्म कितने का भरवाते हो, उन्होंने बोला 1700 रुपए का फॉर्म भरवाते हैं फ्रॉम द जनरल कैटेगरी एंड 1600 एंड लिटिल बिट लेस फ्रॉम द रिजर्व्ड वन। तो उन्होंने पूछा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो दे सेड 400 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ, लेकिन उसमें एक्सपेंडिचर कितना हुआ आपका एग्जाम को कंडक्ट कराने में? 300 करोड़, यानी कि 100 करोड़ अभी बच गया है। लेकिन उस 100 करोड़ में ई रिक्शा पे पेपर भेजना पड़ रहा है, विच इज वेरी क्वेश्चनेबल थिंग, कि हमारे पास इतना पैसा बच भी गया फिर भी हम ई रिक्शा पे ओपन सीलिंग के साथ, जिसमें छत ही नहीं है, उसमें हम पेपर को भेज रहे हैं, एल्यूमिनियम के ट्रंक में पेपर को भेज रहे हैं, और ऐसा ट्रंक बनाया है कि जो ओएसी स्कूल में पर्सन ने जाके तोड़ भी दिया, सील भी हटा दी, फोटो भी खींच ली, वापस भी डाल दिया, फिर सील भी लगा दी, तो वो कहाँ गया वो 100 करोड़? बट एनीवे इस बात पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, एंड दिस इज द क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ सीजेआई कि अब मंडे को सुबह 10:30 बजे पहली चीज़ जो होगी वो नीट की हियरिंग होगी, लंच से पहले इसको क्लोज कर देंगे। 2 चीज़ें उन्होंने मांगी है, एक तो पटना पुलिस की रिपोर्ट एफआईआर यानी कि, दूसरा एनटीए को डायरेक्ट कर दिया है कि तुम अगर ट्रांसपेरेंट हो तो तुम अपना रिजल्ट सेंटर वाइज डिक्लेयर करोगे। एनटीए ने मना किया, बहुत ज्यादा मना किया उनके वकीलों ने, बट दे हैव डायरेक्टेड कि एनालिसिस करने दो ना, इफ यू आर ट्रांसपेरेंट देन डू नॉट हाइड, डर किस बात का है। सेंटर वाइज रिजल्ट बेटा डिक्लेयर होगा बाय सैटरडे, वैसे तो कल तक बोला था बट सैटरडे हो गया, सैटरडे तक वो डिक्लेयर करेंगे और वो अपनी वेबसाइट पे करेंगे, तो हम भी देख पाएंगे, आप भी देख पाएंगे, जजेस भी एडवोकेट्स भी देख पाएंगे, एंड इट विल बी ओपन टू ऑल। तो लेट अस जस्ट वेट फॉर मंडे। बाकी बेटा
मैंने आपको पहले ही बोला था तैयारी आप करते रहिए, वेट मत करिए कि ये दिन आएगा वो दिन आएगा उस दिन मैं तैयारी करूंगा। ऑलरेडी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं और जितने भी बच्चे मुझे नहीं जानते हैं वो सब मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम मेरे ही नाम से है बेटा जी, सीप पाहुजा। सीप पाहुजा मेरा नाम है, मैं बायो पढ़ाती हूँ, जिसने नहीं पढ़ी है वो लिंक ट्री से जाके सीप पाहुजा लिंक ट्री गूगल पे डालोगे मिल जाएगा। सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, आप इसको बेटा जी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं मेरा ऑलरेडी नया बैच मंडे से ही शुरू हो रहा है, उसकी मुझे क्लास लगता है पोस्टपोन ना करनी पड़ जाए, तो मंडे से जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें लोएस्ट प्राइस चल रहा है इस समय। न्यू बैच इज फीनिक्स प्रो, ठीक है। फीनिक्स प्रो नाम का नया बैच आ रहा है, ठीक है। ये एक ड्रॉपर बैच है। अब तुम्हें आइडिया लग चुका है यार, 2 जगह लीक है तो पेपर दोबारा होने के चांसेस नहीं है, तो ज़्यादा वेट करने का नहीं बनता है। फिनिक्स प्रो इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 जुलाई एंड बेटा जी इस समय लोएस्ट प्राइस चल रहे हैं। कितना लोएस्ट प्राइस चल रहा है? दैट इज 4999। ये प्राइस सिर्फ एक बार ही आया था अप्रैल में, दोबारा नहीं आया। यानी कि पूरे अनअकैडमी के सारे बैचेस 11th 12th 13th ऑल टीम्स ऑल टीचर्स सिर्फ आपको मिल रहे हैं 4999 में। ये पूरे साल की फीस है, महीने की फीस नहीं है। ये पूरे साल की फीस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबकी लाइव क्लासेस, और ये आखिरी लाइव बैच है, इसके बाद रिकॉर्डेड आएगा। आखिरी लाइव बैच होने वाला है, सारी लाइव क्लासेस 4999 में है, सारे लाइव टेस्ट 4999 में है, सारे डाउट क्लियरिंग सेशन 4999 में, और इस स्पेशल बैच में जो भी एडमिशन लेगा उसको एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, जो पिछले बैचेस में नहीं थी, ठीक है। तो फिनिक्स प्रो इज नाउ लाइव, लिंक मैंने यहाँ पिन कर दिया है। आपको वहाँ कोड क्या लगाना है? सीप लाइव कोड लगा देना, ठीक है। सीप मेरा नाम है, आगे आप लगा दीजिएगा लाइव, ठीक है, सीप लाइव, ओके। बाकी लिंक मैंने यहाँ दे दिया है चैट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट्स में पिन हो जाएगा। एंड जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो टाइमली ले लें, नए बैच में शुरुआत करें। मैं जेनेटिक्स शुरू कर रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा चैप्टर मैं शुरू कर रही हूँ, उसको मिस आउट मत करें, ठीक है जी। काउंसलिंग बेटा जी अपनी डेट के हिसाब से चलेगी, 24 जुलाई वो बोल रहे थे, बीच में ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। एंड बट CGI इज सेइंग कि काउंसलिंग से पहले ही हम लोग जजमेंट दे ही देंगे, तो 22 जुलाई को जजमेंट आ ही जाएगा। मंडे विल बी द फाइनल डेट ऑफ जजमेंट, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा तुम्हें दिख ही नहीं रहा था? ओहो, मैं कहाँ लिख रही थी और तुम्हें दिख ही नहीं रहा था, आई एम सो सॉरी। अब दिख रहा है? ये मुझे तुम्हें बताना था। नया बैच है फिनिक्स प्रो, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसमें प्राइसेस जो चल रहे हैं दैट इज 4999। क्या प्राइस चल रहा है? 4999, आज ही शुरू हुआ है, ओके। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट्स में बताइए आपका क्या सोचना है इस पर।